Hi everyone, please just tell me that if I'm live. Okay, I think yes. I cannot see any comments. Okay, finally, yes, 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 yes. Now I can see comments. Hmm. Okay. Hi Disha. Hello Bhagyashree, Rekha, Kalpana, Komal, Afsar, Twinkle, Ganesh, Shrishti, Himanshi, Neha, Shashi, Afsar, Mohini, and Khushbu and okay, Ganesh Twinkle, yes. Okay. Shakala. Okay, Santosh. Sorry. Good evening. Very good afternoon. Hi, Achal. Yes, Ganesh. Yes, without the uniform. Yes, of course. Hi, Khushbu. All clear. That's great. Hi, Tehreen. Hello. Ma'am, you have written. Hi, yes, live, live. Thank you so much, Khushbu. Thank you, Neha. Okay, I hope black se azadi. Nice. Where is black? Okay, so here I am not supposed to wear the uniform. Now you want me to wear uniform or what? Okay, so ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, right? Okay, in a good mood and very good revision as much as we can. अच्छा, so first act, like I would like to give you an option. First, from where would you like to start? Limited liability partnership या SOGA? I think limited liability partnership, though, if I ask you year, that is more than enough, isn't it? Thank you, Shweta Smita. Ajay, so those, yeah, no uniform. Yes, of course. Okay, so those who have entered right now in the class, make sure I can see so many people are live, but I cannot see exactly the same number of likes on this video. Please click on the like button because today we are going to revise as much as we can revision of legal aspect of business. Okay, so first let me introduce myself. My name is Niharika Bhagtani. Okay, and yes, those who are asking about my uniform, yes, this is my uniform. I have qualified JRF in commerce. I normally wear this, and with 99.83 percentile, I've also done MCOM. I'm also a CA finalist. So if you want to take Unacademy Plus subscription, don't forget to use my referral code NIX28. You will now get 20% discount. Usually you get 10% discount, but now you get 20% discount for few days. Okay, so this is my profile on Unacademy Plus platform. I'm a legend there on Unacademy Plus platform, and um, I have already started all the courses for 2023, that is for the upcoming examination. I have launched many courses. So if you have not followed me on Unacademy, kindly click on the Unacademy app, type Niharika Bhaktani, or you can even type on Google. Okay, and then you will get me, you will get my profile, and you can click on the follow button. After that, please don't forget to click on the educator community as well. Okay, there are so many special classes that I take almost on daily basis, usually from 6 p.m. to 7 p.m. So there you have some additional benefit, that is you have poll for the learners, which is not there on YouTube definitely. I think you know that, but on special classes you have poll for the learners, interactive live classes, because there is no glitch like like some people say na ki ma'am live is something else and we are 1 or 2 minute behind the live class in YouTube, but it is not there in case of special class. Raise a hand option is there, we can talk
and you never miss a class because you get notification. Lecture notes also you get, and you can attend from anytime, anywhere. And these are my past courses. All the 10 units of commerce I've already launched on Unacademy Plus, and all the 10 units of paper 1 also I've launched, that you can see it from my profile. These are the benefits of joining Plus, that is full coverage of paper 1, paper 2, combined PDFs, doubt clearing session, live explanation, and mock test of Unacademy. Plus, we have also started Engage Batch and Ignite Batch in Unacademy Plus, where you get full complete syllabus, that is 20 units we have already launched, me and Sir Vodanala Shivalingam. You can just use my referral code next28 and you will get access to all the things. Okay, all the courses. And to ace your preparation with the top educators like me, like Shiva sir, and like other educators in NTA UGC net, you can use the referral code NIX28. You will get 20% discount and you will get access to all the Unacademy lessons and all the Unacademy material in NTA UGC net. Also, I have already launched these courses like commerce and paper 1 courses. That is commerce ke 5 units and paper 1 ke bhi 5 units I've already launched. Remaining units I'll be launching. Okay, so here you have to use my referral code. All the links will be given in the description of this video. Plus one more thing, with All India Mock Test NTA UGC Net September 2022, you have a quiz like All India Mock Test AIMT All India Mock Test on 16 September for paper 1 and 17 September paper 2. So if you get rank 1, rank 2, rank 3, then you can win some amazing prizes. This you can see. Okay, and in case if you are studying paper 1 also from me, then if you have missed these classes, then make sure that you see these classes. Whether you are plus learner or free learner, you must see these two classes which I took on 8th and 9th September. I'll be giving links in the description of this video. Must watch. Okay, so come on, let's get started. Okay, ma'am. Okay. Okay, I can see so many comments. Acha. My voice is too low, is it? Sarika, please tell me. Is my voice too low? How to enroll? Okay, how to enroll? Please see. In those free classes, Santosh, you are asking, I'll be giving you link. I'll be giving all the links, providing all the links in the description of this video after the end of this video, and then you can go and go on that link. You will get the option to enroll. You check 2 times. It's all fine. 100% volume. Okay, that's great. Okay. So now you have the option whether you want to start with LLP or you want to start with directly from SOGA. Come on, please tell me. Use your veto power. You don't get such power again and again. Okay, you want to start with LLP or SOGA? Ha, you can, Sarika, you can go back, connect again, or you can connect the earphones as well. Soga. Awesome, awesome. Very nice choice. Amazing. Because as you know that LLP mein to what we have to do? Just the year and the difference between the LLP plus partnership and companies act, that is अच्छा बस year बता दो मुझे. Then I'll go to Soga. Year. What is the year of LLP? Is it 2005 or 2008? Soga 1. Of course, of course. Soga से होगा. Nice. Okay. Okay. Hmm. टेल मी ईयर बता दो मुझे डेफिनेटली वेरी नाइस सारिका हाँ यस यस मोहिनी 2008 or 2005 what should I write I want to write something with 2000 I'm willing to write 2000 then 8 लिखूं या 5 लिखूं 8 लिख दूं okay awesome मैंने सुना है I have heard that RTI is also there RTI Act उसका ईयर क्या है 2005 है क्या is it अच्छा okay ठीक है that's great ठीक है now soga does anyone remember the year of soga 1930 is it 1930 okay ठीक है thank you sarika okay I hope my voice is audible right now properly okay अच्छा कोई मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर बताएगा प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट come on is it
1972, is it? Okay, 1972. 72 ना पक्का? Okay, great. अच्छा, negotiable instrument act का बता दो please. Negotiable instrument. Please tell me negotiable instrument act. Which year? 1880? What should I write? 1880? I want to write something. 1 or 1861 or 1961 or what? 1881? Okay. Hi. Yes, Shrishti. Hello, Shrishti. Yes, Kalpana. अच्छा ओके 1872 राइट गलती से मिस्टेक यस 1872 एंड 1881 ओके नाउ अच्छा जीएसटी का याद है व्हाट इज फॉर जीएसटी बता दो 2016 लिखूं या 17 व्हाट शुड आई राइट 16 और 17 16 or 17 17 okay then what about 2016 what came in 2016 कुछ तो आया था was it IBC insolvency and bankruptcy code isn't it okay can anyone tell companies act year old year and new year IBC very nice okay companies act okay 2000 and 2013 is the new इतना याद नहीं है हो ओके एंड द ओल्ड वन कौन बताएगा 1956 ऑसम ग्रेट अच्छा ओके अभी इफ आई आस्क यू दैट आईपीआर वो याद है क्या देन दैट टाइम यू कैन से नो मैम इतना याद नहीं बिकॉज आईपीआर all the intellectual property rights like copyright patent trademark all those things they go on they go under amendment so much that we don't require to learn all these years okay and every single IPR is having different year plus different amendment so no need to learn IPR year okay Companies Act से याद आया C for companies C for competition can anyone tell me competition act year is it 1999 or 2002 or something else please tell me 1999 or 2002 or something else come on quickly tell me 2002 then what came in 2002 then what came in 1999 FEMA is it FEMA okay ठीक है तो अभी अगर 1999 में FEMA है तो फेरा what FERA has done come on please tell me what about FERA is it 1973 is it correct or 1873 1973 I'm sure that is right okay नहीं शायद नहीं पक्का है 1999 FEMA was there okay so FERA we have written FEMA we have written competition act competition act we have written okay anything else COPRA कौन बताएगा COPRA that COPRA act please tell me that is 1986 शायद is it कोपरा नॉट कोबरा कोपरा 1986 इज इट किसने लिखा 19 मैम आगे आप लिख लो इतिशा नहीं फुल ईयर लिखना है ऐसे नहीं चलेगा ओके 2019 में आप क्या लेके आए शिलू ओके न्यू कोपरा ऑसम सो न्यू वन इज व्हाट 2019 ओल्ड कोपरा इज इन 1986 ऑसम ठीक है Cobra. Okay, that's it. Okay, I guess most of the things we have covered. Now let's get started with our soga. Soga se hoga. Aaj to. Okay, so soga se we are going to start 1930 and now you are going to type as much as you remember. Okay, so that will be the key point. Just type whatever you remember. You don't have to make notes right now.
right? Because 10 days mein we are having exam, so no need to make any notes. Okay, you can revise it from here. Okay, so soga, first of all, there are two terms. First is what? Sale, and one is agreement to sale. Agreement to sale. Fine. Okay, sale, or you can say agreement to sell. Okay, so what is, acha, where is the immediate transfer of ownership? Right, if I say immediate transfer of ownership, it is in sale. Okay, soga क्या है मैम? अच्छा, okay, soga is sale of goods act. We are going to revise this first. Okay, sales of goods act. LLP I'm not doing right now because LLP ka max to max year se you can expect a question, and the difference you already know, that is in LLP and partnership and companies, where LLP is exactly between the partnership and the company. Okay, the freedom of the partnership and the rules and regulations of the company, so taking good from both the sides make what? LLP. So no much question comes from LLP. That's why I'm starting from soga. Soga se any question can come. Sale of goods act. Okay, now you can see there is immediate transfer of sale. Sorry, immediate transfer of ownership, that is in sale only. Okay, immediate. But acha, what example we have done? Ki sale is like, you can consider कि ठीक है, sale is like marriage. Okay, and agreement to sell is like, engagement. Fine. So in engagement, do we have transfer of ownership of the new house, new place, new city exactly at that date? No, at future date. ठीक है, at future date. उसके बाद here the contract is executory or executed? The contract is executed. Okay, your contract is executory. Why executory? Because it is still we are yet to perform. Very nice, Sagar, great, awesome. Okay, here we can say that the contract is executed because the work is performed from both the parties. Okay, that is every single party, male, female, pandit ji, guest, friends, everyone. It is executed from all the sides, if you are considering the example of marriage. Fine. Okay, here it will be executing. Now the nature and the rights of buyer, here in the nature and the rights, if you say rights of buyer, please try to recall what are the rights of buyer. Is it just in rem or just in personam? It is just in rem. What is the meaning of rem? Rem means right against the whole world. Like example, if you have done the sale deed of a house. Okay, imagine you are purchasing a house. Okay, and you are living in that house. So now uh, can you entertain कि कोई भी और पर्सन आपके घर में आए और लाइक जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ पिक कर ले, या फिर उसे जहाँ बैठना है वो वहाँ पे बैठ जाए? No, you are having the right against the whole world. If you have bought the house, then your right is that किसी भी person को, किसी भी outsider को आप out ही रख सकते हैं. Okay, that is right against the whole world, just in rem. Please remember this. Here in this case, we are having the buyer is having just in personam. Okay, what is the meaning of personam? That means just against that particular thing, just against that particular person. Okay, that means suppose x ने x ने let out किया z को house, तो x के पास सिर्फ right है कि वो सिर्फ z से ही पैसे ले सकता है. Only and only he or she can take rent only and only from Z. Okay, so this person is having the right against this particular person. If he or she does not pay, then Mr. X cannot ask any other person to pay. Okay,
Yes, example, tenant. Example, tenant. Are you all getting it? Are you all getting it? Yes or no? I hope if I'm using a little bit of Hindi, चलेगा. थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. Little bit you will understand. जैसे सगाई हो गई तो उसी से लड़ाई करो. Yes, exactly. किसी और गर्ल या किसी और बॉय से आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं. जिससे सगाई हुई है, जिससे एंगेजमेंट हुई है, सिर्फ आप उसी से ही सगाई कर सकते हैं लड़ाई. राइट? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बट हाँ, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, सब कुछ एग्जीक्यूट कर लिया, सब कुछ ठीक है. तो यू आर हैविंग द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड कि नहीं, ये पार्टनर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है या मेरी है. ओके, किसी और का राइट इस पे नहीं है. ओके, नाउ सी, सो नाउ next is what? Next we are going to do what? You can see there are two very famous things which are asked in your exam. That is, what is gratuitous bailment and what is non-gratuitous bailment. Gratuitous, gratuitous, gratuitous. This is asked in exam. Bailment and what is non-gratuitous. Non-gratuitous. Acha, I hope you all understand that what is the meaning of bailment. Chalo, let's create one example of a bailment. Okay. शादी में विदाई. Yes, of course, Mohini, why not? Okay. Okay. Nice. Okay. So see, very nice. Acha, bailment means, imagine Himanshi is there right now. Let's create one example. Himanshi is there. Okay. So Himanshi, you are going out of the city. अब आप सिटी के बाहर गए. So who is your friend? Shweta Smita is your friend. Okay. So I'm writing Shweta. So now, Himanshi, Shweta is not just your neighbor but your friend also. So now, before going out of the city, what you are doing, you are actually giving your valuable attires and everything, basically valuable thing, like example, gold. गोल्ड आपने किसको रखने के लिए दिया? आपने श्वेता के को रखने के लिए दिया कि श्वेता, जब तक मैं 10 डेज के बाद आऊं सिटी में वापस, तो मेरा ये गोल्ड संभाल के रखना. ओके, किसी को थोड़े दिन के लिए संभालने के लिए अपने थिंग्स देना, अपने वैल्यूएबल्स देना. दैट इज व्हाट, दैट इज बेलमेंट. नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या श्वेता ने ये बाय किया है? यस और नो? यस और नो? हैज श्वेता परचेज दिस? नो. हैज श्वेता paid any amount? No. So is Shweta having right to use that asset? No. Is she having any right कि नहीं ये गोल्ड पहन के और चलो अभी मार्केट में या फिर पूरे घर में गोल्ड पहन के she is roaming around? No, she is not having that right. She can just keep that thing only and only safe in her locker. Okay, till the time Himanshi will be back, because this gold belongs to what? Belongs to whom? Belongs to Himanshi. Now, when Himanshi will come back, now कैन श्वेता से कि नहीं नहीं ये गोल्ड तो मुझे पसंद आ गया, अब तो मैं ही रखूंगी इस गोल्ड को. हिमांशी, आप कोई और गोल्ड परचेज कर लो. कैन शी होल्ड? नो, शी कैन नॉट होल्ड. बट एटलीस्ट, अच्छा फोटो खींचूंगी और इंस्टा पे अपलोड करूंगी? नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. एट द मैक्स व्हाट, हाँ, एट द मैक्स व्हाट श्वेता कैन डू, श्वेता कैन आस्क कि देखो मैंने ना इसको इतना अच्छे से संभाल के रखा, इतना अच्छे से संभाल के रखा, इसके लिए एक छोटी छोटी सी पार्टी तो बनती है. ओके, एक छोटी मोटी पार्टी तो बनती है, एक रिवॉर्ड तो बनता है. ओके, सो सी, यहाँ पे अगर हम रिवॉर्ड देंगे, अगर हम एक पार्टी देंगे, हिमांशी श्वेता को एक पार्टी देंगी, एक रिवॉर्ड देंगी, तो वो रिवॉर्ड और या फिर वो पेमेंट किस में आएगा? नॉन ग्रैटिट्यूअस में. बट सपोज अगर हिमांशी ने श्वेता से थैंक यू में काम चला लिया एंड श्वेता इज हैप्पी कि हाँ, हिमांशी से थैंक यू फॉर कीपिंग दिस सेफ. सो जी फॉर ग्रैटिट्यूअस, जी फॉर
फ्री लाइक गिफ्ट. गिफ्ट कैसा होता है? गिफ्ट फ्री में होता है. गिफ्ट इज फॉर फ्री, सो फॉर फ्री ये हो गया फ्री के लिए. ओके, सो नाउ फ्री में काम चला लिया. ओके, रिटर्न में कुछ नहीं, ओनली थैंक यू, ओनली थैंक यू बिकॉज दे आर फ्रेंड्स. ऐसा भी हो सकता है. Yes, of course. So this is like gratuitous bailment. Okay. Now, reward या payment मिला, ये किस चीज़ में होता है? Example, can I say that tailor is a beautiful example कि tailor को भी हम अपने clothes देते हैं. अब tailor cannot keep it with them, isn't it? Tailor cannot keep it with them. Tailor has to return our goods back, right? Okay. Suppose हमने car service के लिए दी. कैन दैट कार सर्विस पर्सन से कि नहीं नहीं ये कार तो बहुत ही अच्छी लगी, ये हम रख रहे हैं या इसका पैसा देना पड़ेगा? नो नो नो, दे विल पॉलिश द कार, दे विल क्लीन द कार एंड दे हैव टू गिव us back. That is actually a non-gratuitous bailment. Okay, nice, Manpreet. Non-gratuitous tailor or service center. Very nice, very nice. Okay, so now what are the essential? So now what are the monetary is non-gratuitous. Perfectly right. You can see monetary is non-gratuitous. You can write it if you want. Here, this is monetary and this is in free. Free. This people get confused and this comes in your examination. Now, what are the essential? ऑडी ऐसे चली जाएगी तो हो गया काम. ऑफ कोर्स इससे बेटर तो ऑडी का ओनर खुद ही ऑडी को क्लीन कर ले. राइट, इजंट इट? पर फिर पता नहीं चलेगा ना कि वेदर ही इज ओनर और ड्राइवर. चलो कोई बात नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, yes. Now, what are the essential elements? What are the essential elements of a contract of sale? So see, in sale, of course there should be two parties, right? Contract of sale में, like example, Twinkle is a party, Dinesh is a party. Twinkle, Dinesh, there are two party. Fine, okay. Now there should be some goods involved in the transaction. Okay, what are the essential elements? Okay, so see, there should be two parties. There should be goods for the contract of sale. There should be price, MRP, price, कुछ तो set होना चाहिए. Okay, there should be transfer of ownership. Right, okay. Then all the essentials of a valid contract. It should be a valid contract. Very nice. Price, or you can say consideration. Chalo, consideration. Okay. Then valid contract. Fine. Okay. And contract that should include what? Contract actually includes what? Sale and agreement to sale, both. Okay. Now, what are goods? Any movable items are goods. Goods. Goods are what? Any movable item. Now, you know what is the beauty of this definition? That this actually comes in our exam also. Ki any movable item, like example, is land a good? No. ठीक है. अच्छा, now, any kind of, अच्छा, is building a goods? No. That's a property. Okay, that will be a sale of immovable property. Here, this is sale of goods act, what we are studying. That's why the goods should be movable, but it should not be what it should not be. It should not be cash. Okay, and it should not be any actionable claim. But वो क्या हो सकता है? What it can be? It can be, definitely it can be stocks, shares. Fine. It can be what? And other than this, it can be growing crops, right? Okay. And it can be anything attached to or forming part of the land or agreed seaward. Like example, grass. Okay, something which is attached to land, but it is detachable. Getting it? कुछ ऐसा जो detach हो सकता है. Okay. Now,
Why not actionable claims? What are the actionable claims? We want to know that what are actionable claims. ऐसे claims, they are such claims like suppose there is a हाँ there there is a share in partnership और जिस पे एक्शन लिया जा सकता है, तो वो गुड्स थोड़ी हुआ, वो मूवेबल आइटम थोड़ी हुआ, उस पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन एक्शन लिया जा सकता है, लाइक अ शेयर इन पार्टनरशिप, लाइक क्लेम ऑफ द मनी ड्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, उस पे एक्शन लिया जा सकता है, वो एक क्लेम है, बट वो गुड्स नहीं है। ओके, तो वो कैश के आसपास हो गया कि यस ये क्लेम है, ये एक शेयर है, बट ये एक मूवेबल गुड्स नहीं है। स्पेसिफिकली गुड्स की डेफिनेशन से ये रिमूव कर दिया गया है। एनी मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई हाइपोथिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि ये एक्शनेबल है, एक्शन लिया नहीं है, दिस इज एक्शनेबल। अभी तक ये शॉर्ट हमारे ओनरशिप में नहीं है, या फिर ये किसी और के पास है, या किसी और के पास गिरवी है। ओके, जस्ट बिकॉज इट इज गिरवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये सारी चीजें जिस पे एक्शन लिया जा सकता है, ये सब गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके, एनी मूवेबल आइटम लाइक शेयर स्टॉक्स, ये डेफिनेशन में आता है इन योर एग्जाम, दैट यू हैव टू राइट, दैट यू हैव टू क्लिक दैट व्हाट कम्स इन goods. Fine. Now there are certain types of goods, certain types of goods, that is one is, this is another very very important question from your exam point of view, that is goods में आएगा, एक होगा existing goods, let's write existing goods. Fine. Then next one is what? Future goods. Future, future. Okay, future goods. Next is what? Contingent goods. अच्छा, now existing goods, that means अभी already ये हैं, exist करते हैं। अच्छा, are you all comfortable in little bit मतलब like थोड़ा और मैं हिंदी में अगर बोलूँ, is it okay? Or is there anyone in class who do not understand Hindi at all? ऐसा कोई है कि जो बिल्कुल भी हिंदी अंडरस्टैंड ना करे? Sorry, is there anyone in class who do not understand Hindi? Please tell me. If he or she is there, then I'll continue full in English. Otherwise, more I'll use Hindi. Okay. ऐसे कोई goods, some goods, English will be best. ऐसे कोई goods जो specifically mentioned है. Example, just अभी, श्रिया, आपको क्या चाहिए? just अभी, आपको ये वाले specs चाहिए, you want these specs, ये specific goods है, ठीक है, तो ये ही एक specific goods है, यही एक category है, इसके अलावा आपको और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। एंड एग्जैक्टली यही आपने जो स्पेसिफाई किया है वही, स्पेक्स का नंबर चेंज नहीं हो सकता, स्पेक्स का डिज़ाइन चेंज नहीं हो सकता, दीज आर, ठीक है, एग्जाम्पल पर्टिकुलर स्पेक्स, ओके, विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ओके, नाउ सी, ना नेक्स्ट वन सब चलेगा यहाँ पे, वेरी नाइस, गुड। नाउ नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट? आर असर्टेन गुड्स, ascertained goods. Okay, now like example, goods that are already identified. Example, right now हमने बोला कि जैसे we went to purchase some fruits, so all the fruits are in front of us, so what we say कि भैया just 1 kg apple देना, 1 kg apple. So out of all the 5 kgs which are visible to us, which are ascertained, उसमें से any 1 kg good apple हमने पिक कर लिए, any 1 kg, okay, but they are in front of us. Next is what? Unascertained. What is the meaning of unascertained? That means ऐसे goods जो हमारे सामने नहीं है बट डेफिनेटली कुछ गोडाउन में पड़े होंगे। लाइक एग्जाम्पल, यू सेड कि यस ओके मुझे चाहिए ऐसे टाइप के कुछ और स्पेक्स, या मुझे चाहिए एक सैनिटाइजर, ओके, सो अब या फिर मुझे चाहिए 20 kgs ऑफ एप्पल। अब 20 kgs ऑफ एप्पल सामने तो नहीं है बट डेफिनेटली वेयर हाउस से निकाल के आपको दे सकते हैं, ठीक है, या 40 kgs ऑफ एप्पल, 50 kgs ऑफ एप्पल आपको वेयर हाउस से निकाल के डेफिनेटली दे सकते हैं।
Or you can take another example of, suppose, perfume आपको सैंपल दिखा दिया, एक्चुअल प्रोडक्ट असर्टेन नहीं है बट सिमिलर और एग्जैक्टली सेम फ्रेग्रेंस का आपको परफ्यूम दे सकते हैं. ओके, getting it? Yes. Example, death insurance. Yes, very nice. That's also perfect example. वो असर्टेन तो होगी नहीं. ऑफ कोर्स सामने हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें ये वाला चाहिए, बट वो अनअसर्टेन होगा. उसमें से, उस इंश्योरेंस में से हम कोई भी लाइक वन, ठीक है, वी विल पिक फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. यस, सॉल्ट इज ऑल्सो perfect example. Salt. Okay. Nail paint. Nail paint you get to test. I don't feel these days they give us a tester for nail paint. Is it? If you get, then you are certainly very lucky. Okay. See, see, future goods, that means the goods which are not made right now. Example. हाँ, नहीं सच्ची इतिशा. Okay. Very nice, Kalpana, very nice. Acha, future goods which are not made. Now, you know, Kalpana wants some furniture in her house. So she does the contract, or she want to paint her house. So now she's just selecting, yes, okay, this shade I want, this company I want, and then get the paint done. So first we buy, then the paint is done. First we select the furniture, then the furniture is made. Okay, next about what? Next is what? Contingent. That means the goods which will be made on the happening of certain event. As you said, yeah, of course. Now, burial insurance will definitely come here. Okay, some insurance money will definitely come here, but no, it is related to money. We'll just avoid that. We'll just take the product, not the money. Okay, now, ये पहले, अच्छा, okay, Srishti, okay. So see, on the happening of certain event, example, if there will be rain, then I will buy the product. If rain, then I will buy the umbrella or raincoat. Okay, if okay, so it will happen only on the condition of, only on the happening of certain event. Now, delivery of goods, that is also very important topic, which NTA asks that which type of delivery is there. So types of delivery, first is what? First is the actual delivery. Next is what? Constructive delivery. Next is what? Symbolic delivery. Okay, now actual delivery ka example, happening, yes, very nice, very nice. Now, when the goods are physically delivered to a particular person. Now, किसी ने बोला नेल पेंट, क्या मैं मान सकती हूँ कि यस डेफिनेटली, अगर आपने सृष्टि, अगर आपने नेल पेंट परचेज करी है, इफ़ यू परचेज द नेल पेंट, दैट देन दैट प्रोडक्ट इज इन योर हैंड. Okay, if you buy a perfume, then that product is in your hand, you get the delivery. Okay, if you buy the pizza, then that product is actually in your hand. That means physical delivery is there. Delivery is there. Yes, of course. What about constructive delivery? Like example, power of attorney papers. Have you heard? Okay. Yeah, power of attorney, or a parcel which you pick up. Now, if you might be thinking, कैसे, अगर, suppose, how? Now suppose, जोरवाल मैम, पिज्ज़ा का नेम मत लो, बुक, अच्छा, अब भोजन थी, आप तो खा सकते हैं डेफिनेटली. मैं नहीं खा सकती लाइव क्लास में, बट एटलीस्ट आप तो खा सकते हैं. इट विल बी फनी इफ आई ईट. ओके, सो सपोज सागर. सागर, अच्छा, पिज़्ज़ा का एग्जांपल नहीं लेना था, मैं तो यहाँ पे पिज़्ज़ा का ही एग्जांपल लेने वाली थी फिर से, कि अभी कोई बात नहीं, कुछ और रिसीव करते हैं हम. एक लेटर रिसीव कर रहे हैं. सागर, आपको किसी ने लेटर भेजा है, राइट? ओके,
अब आपकी जगह किसने रिसीव कर लिया? किसने? दिनेश ने रिसीव कर लिया। ओके, सो अब आप हैं बाहर, आपकी जगह पे दिनेश ने रिसीव किया लेटर। सो क्या ये डिलीवरी हो चुकी है? यस ऑफ कोर्स हो चुकी है। अब वो किसने लेटर भेजा है वो पता नहीं। दिनेश ने आपको बोला कि आपका एक सीक्रेट लेटर आ गया है, ठीक है, मतलब डिलीवर हो चुका है। ओके, आपके घर पे डिलीवर हो चुका है, मतलब दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपके हाथ में फिजिकल पोजेशन नहीं है, बट आपके नेम से आपके घर पे डिलीवर हो चुका है, दैट मीन्स इट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अच्छा, पापा ने रिसीव कर लिया। अच्छा, तो पापा तो शाबाशी देंगे ना, क्योंकि वो तो एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग का लेटर था, इजंट इट? आपको क्या लगा? मुझे तो लगा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग का था, या फिर वो 14 डेज नोटिस जो देते हैं फोरफीटर ऑफ शेयर्स का, उसका नोटिस आया होगा शायद। आई थिंक सो, राइट? ये तो सागर ही बता सकते हैं। शायद उसके पैसे ड्यू होंगे, इसलिए फोरफीचर का नोटिस आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट सिंबॉलिक डिलीवरी। लाइक ऐसी डिलीवरी जिसमें फिजिकल गुड्स मिलते ही नहीं है, जैसे आपके हैंड में नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग अ हाउस, of course house cannot be delivered in your hand, but house key will be delivered in your hand. That is a symbol to the delivery कि yes ये घर हुआ आपका। ओके, कार कीज, कार आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा, कार का कीज आपके हाथ में दिया जाएगा, कार की। ओके, या मीटिंग का था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, आप लव लेटर सोच रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, okay, big key, yes, the big key which you get to get a photograph. Definitely. Now there is a difference between a condition and a warranty. Please tell me which one is compulsory. A condition is compulsory, or a warranty is compulsory. Condition or a warranty is compulsory, which is very very compulsory. Like which will be treated as a, like example, a breach of condition, may be treated as a breach of warranty. Yes, so this is C for condition, C for compulsory. Like example, हमने क्या लिया एग्जाम्पल? अभी कार का एग्जाम्पल लिया ना? यस, सो द नेसेसरी कंडीशन इन अ कार इज दैट इफ यू आर बाइंग अ कार, who is buying a car right now? Bhojanti, you are buying a car. Okay, so what should be the necessary condition? कि उसके एटलीस्ट 4 टायर्स तो होने ही चाहिए। यस, बिना 4 टायर्स के यू विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। 3 टायर्स हुए तो यू विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। Okay, that is a necessary, that is a compulsory condition. Okay, now warranty. Now see, you can say कि warranty is just the collateral to the main purpose of the contract. मतलब sometimes the warranty is there, sometimes the warranty is not there. Basically warranty is just limited to the damage of the product. Okay, now ठीक है, okay, now suppose a breach of warranty cannot be the breach of condition, but a breach of condition can be the breach of warranty. That line can definitely come in your statement form. Please see. अच्छा, कार से रिक्शा बन जाएगी, that's a nice thought. अगर 4 की जगह 3 टायर्स मिल गए तो yes. So damage of the product covers under warranty, right? Okay, so suppose अगर कार में कुछ स्क्रैच आया, सपोज डिलीवरी के टाइम पे इस पे स्क्रैच आया, तो नाउ व्हाट बायर कैन डू? बायर कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस, क्लेम ओनली फॉर डैमेजेस। बट अगर ये कार की जगह ऑटो के टाइप्स ओनली 3 टायर्स आ गए, तो द बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, या sound system AC, yes, very nice. So scratch, AC, sound system, they are under warranty. But tires are under the condition.
Warranty can be amount, any amount, right? Of course. Okay, now express condition and implied condition, you know, sometimes we express the condition कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए. Now what see what Bhojanti has said, मुझे expressly blue color car ही चाहिए, red color car नहीं चलेगी. So that is an express condition, a compulsory condition. And an implied condition, that means जैसा मुझे टेस्ट ड्राइव में दिखाया था वैसा ही कार चाहिए, उसके बिना मुझे कार नहीं चाहिए. अगर आपने मुझे चलाई BMW, ओके, और उसकी जगह मुझे दे दी मारुति, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए. बेसिकली सेल बाय सैम्पल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कौन कौन सी कंडीशन? फर्स्ट इज व्हाट? सी इम्प्लाइड कंडीशन में क्या क्या होता है कि एक तो टाइटल ऑफ द गुड्स जैसा बताया. अब BMW की जगह, सपोज BMW की जगह हमारे पास आ गई मारुति, तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओके, नाउ condition as to, very nice Sagar, 6 express, 4 implied. Awesome, awesome, awesome. Now conditions concerning the quality of fitness, or you can say fit to use, सेल बाय सैम्पल, जैसा सैम्पल में दिखाया था वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए, कुछ और नहीं. ओके, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जैसा डिस्क्रिप्शन बताया था, एज कल्पना सेड दैट साउंड सिस्टम बताया था, तो साउंड सिस्टम होना ही चाहिए. विदाउट साउंड सिस्टम, अगर एक्सप्रेसली बोल दिया या इम्प्लाइडली बोल दिया कि विदाउट डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है. ओके, एंड होलसमनेस, टूटा फूटा सामान नहीं चलेगा, पूरा होल होना चाहिए, होलसमनेस. Okay, now what is a caveat emptor? Caveat emptor, what is caveat emptor means? Let the buyer beware. Let the buyer beware. And what is the caveat venditor? That is, let the seller beware. Okay, so now conditions you have done: fitness as to quality or use, then goods purchase under patent or brand name, that also come. Patent or brand name, तो वो उसी patent और brand name के अंदर होना चाहिए. Okay, पेटेंट और ब्रांड उसी ब्रांड का होना चाहिए. ओके, ब्रांड कैन नॉट बी चेंज. ओके, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स आर वेरी मार्केटेबल क्वालिटी, दैट मीन्स होलसमनेस, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैम्पल. ट्रेड यूजेज, यूज करने लायक होना चाहिए. ओके, एंड देयर शुड बी नो डिफेक्ट्स, नो डिफेक्ट्स. Fine. Now, what are the rights of an unpaid seller? Unpaid seller, this came in your exam once. Please see, rights of unpaid seller. Unpaid seller का मतलब क्या होता है? What is the meaning of unpaid seller? Buyer के बाद वाली टर्म बता दूं. बायर कहाँ पे लिखा? Let the buyer beware. अच्छा, caveat emptor. अच्छा, okay. And the seller, let the seller beware. It is caveat venditor. Okay. Now, see, rights of the unpaid seller. What is rights of the unpaid seller का मतलब क्या हुआ? That means a person, a buyer is actually buying a goods. Buyer ने goods तो buy कर दिए, ठीक है, goods तो ले लिया, but ठीक है, goods आ गया, but buyer did not pay to the seller money नहीं दिया, अभी तक पे नहीं किया. तो सेलर का राइट्स क्या होगा? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सेलर? सेलर क्या कर सकता है? सेलर क्या बीच में लियन कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स. लियन मतलब जब्त कर देना. ओके, व्हाट यू से, यस, जब्त कर लेना. ओके, या ओके. स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बीच में रास्ते में रोक देना, या फिर वो गुड्स को रीसेल कर देना. रीसेल गुड्स और स्टॉप इन ट्रांजिट. ओके, या हाँ, रीसेल कर लेना या विथहोल्ड कर लेना डिलीवरी को. ओके,
और अगर और एक और चीज, बायर से प्राइस मांगना, आस्क फॉर प्राइस फ्रॉम बायर, ओके, आस्क फॉर प्राइस, एंड डैमेजेस के लिए भी स्यू करना, और इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि उसने क्या होने दिया, उसने उस गुड्स को रोक के रखा, ठीक है। तो प्राइस, डैमेजेस, इंटरेस्ट फ्रॉम बायर, बायर से ये चीज है मांगना, ओके, फोरफीट करना, राइट, ठीक है। नाउ दैट्स इट, आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। नाउ व्हाट इज एन ऑक्शन सेल? ऑक्शन सेल इज जस्ट लाइक यू कैन से पब्लिक इवेंट ना, कि जिसने हाईएस्ट बिड लगाई, ओके। जैसे एक होता है ऑक्शन बाय, वन होता है ऑक्शन बाय, ओके। तो अभी देर आर सर्टन बायर्स, यू नो ना, in auction buy there are certain buyers, and like suppose there is a seller, और वो seller बोली लगाता है, like example you might have seen, you might have seen in that movie, वो कौन सा था, मजनू भाई की पेंटिंग, is it right? मजनू भाई की पेंटिंग थी, okay, so whoever is actually putting the highest बोली, highest bid, okay, in the fall of hammer, okay, so yeah, so at the fall of hammer, so that person will become the actual buyer. Example, 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh, ओके, तो 50 लाख पे हमारी, सो 50 लाख एक, 50 लाख दो, 50 लाख थ्री, तो इस पे हमारी बोली हो गई फिक्स, ओके। नाउ व्हाट इज ऑक्शन सेल? दैट इज एक्चुअली अ रिवर्स ऑक्शन दैट केम इन योर एग्जाम वंस, दैट इज okay, so now it is actually a public event where all the sellers are there. These are the sellers. Now, the person who will sell at the lowest price, that will be finalized. Example, he is selling in 50 lakh, 40 lakh, then 30 lakh, 20 lakh. Okay, so now 20 lakh will be taken up by the buyer, obviously. Now this is usually happening in what, like you might have seen contracts, or that one government contracts and all, okay. Horse painting, right. So this is also known as what, reverse auction, government tenders में, ठीक है। Now with this we finish our Sale of Goods Act. Now we'll start with intellectual property rights. Whole Sale of Goods Act, full, complete, revised. Now before starting the next act, would you take just 10 seconds to click on the like button if you like this revision? Like 1 hour may you have completely, you maybe less than 1 hour, yes, of course, just less than 1 hour may you have revised full IPR. Please click on the like button. Intellectual property rights. Here you don't have to learn years for your examination, because there are different years. 2 बार लाइक किए हैं मैम, अरे अनलाइक हो जाएगा वो शायद, आई थिंक वो लाइक रिमूव हो जाएगा, ऑलरेडी डन, दैट्स ग्रेट। Thank you so much, Shrishti. Okay, next is what, IPR. So in IPR what you have to do, WIPO, that is, see, what is the full form of WIPO? That is World Intellectual Property Organization. Please remember the full form also. World Intellectual Property Organization. फिर से डन, दैट्स ग्रेट, गुड बॉय। 2 बार नहीं करने का, हाँ, चीटिंग हो जाएगी वो। ओके, सो बेसिकली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली अ ग्लोबल फोरम,
Okay, this, so a global forum for what? For intellectual property. Hope it is visible. I guess it's visible on the screen. Yes, it is for the global forum that they are actually self-funding. What? Self-funding all the UN nations with how many states? 193 states. Very nice. Where is the headquarter? Switzerland. Very nice. Geneva, Switzerland. Okay, awesome. Switzerland. Fine. And what is their mission? Don't you feel like that we should discuss the mission too? कि क्यों क्यों बना है ये वीपो, क्यों इतने सारे states nations को collect करके and they are doing some self funding for the betterment of all the world, that is so that they can increase the creativity level, plus protect, see, promote the protection of the IPR. They can protect and promote IPR. इससे क्या होगा? क्यों? क्या हो सकता है? See how this VPO is actually working. देखो, VPO के अंदर और IPR के अंदर there are 2-3 things which we have heard. Have you heard about patent? Yes. Have you heard about trademark? Yes. Have you heard about copyright? Yes. Okay. So patent, trademark, copyright, you all have heard. Fine. Have you heard about designs? Yes. Okay. So now you all have heard this. Okay, all these things. Now, designs, protection and all that. So क्या है कि अगर suppose करो right now खुशबू is has actually made something very creative or some original work. Okay, right now she has made some of the original work, written some of the original thing. Okay, now original poetry written by Khushbu. Now किसको पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया. मैंने क्या किया? मैंने कॉपी कर दिया और मैंने नीचे खुशबू की जगह निहारिका लिख दिया. विल दैट वर्क? क्या किसी को अच्छा लगेगा? नहीं, खुशबू को अच्छा नहीं लगेगा. व्हाट खुशबू विल थिंक कि अरे यार नेक्स्ट टाइम से ना मुझे ये क्रिएटिविटी करनी ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग चुरा लेते हैं. ओके, सो इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा जब कुछ लोग सिर्फ एडिट कर लेते हैं और सिर्फ अपना नेम लिख लेते हैं. ओके, दैट्स वाई इट एक्चुअली हैम्पर्स द क्रिएटिविटी. तो खुशबू के लिए क्या स्पेसिफिकली बनाया गया? कॉपीराइट बनाया गया कि अगर आपने ये चीज़ ओरिजिनल कंटेंट लिखा है, समथिंग ओरिजिनल जो सिर्फ आपने लिखा है, दैट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट योर वर्क एंड दैट विल इन्हांस योर क्रिएटिविटी कि नेक्स्ट टाइम भी आप ये ही करें, आपका ही नेम आएगा. कब तक नेम आएगा? कितने ईयर्स तक आपका नेम याद किया जाएगा? टिल 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 योर लाइफ प्लस, सी, लाइफ, wait, till your life plus 60 years. ठीक है. Same way trademark and patent and all that also we are going to study. Trademark and patent also we are going to study. Okay, yeah, no one can copy. So we are actually going to study all the differences between all the things. First thing, very important thing. First, let's write copyright. अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली. सो हियर व्हाट थिंग्स विल इंक्लूड? ओरिजिनल वर्क ऑफ खुशबू. ओके, नाउ सपोज Khushbu has done original work, but it is not something very new, innovative. But suppose if something is very innovative, so it will come under patent. तब उन्हें दिया जाएगा patent. Okay, so suppose Kalpana, yes, Kalpana has done some new invention. Fine, okay. And Twinkle has done some unique logo, brand, etc. ठीक है. So unique name or logo, that will come under trademark. Fine. So I'm writing something very unique. If something is very unique, that will come under trademark. If something is invention, then that will come under patent. And something is original work, then it will come under copyright. Okay, here you can say life
plus 60 years. Please remember this. Full life plus 60 years, that will be the time limit till which it will be protected. Patent का protection will be up to 20 years. And trademark में goods का trademark will be protected up to 10 years. And services का it will be protected up to 17 years. Fine. Okay. Very nice, very nice. Sagar, you remember years? Very nice. But see, that's good. But NTA will never ask the years. Why? Because देखो copyright का is अलग year, then patent का अलग, फिर trademark का different, then amendments are also there. That's why NTA is not going to ask the number of years. The only thing that you have to remember from this act is this one, which is very, very, very important. Here you have, see, rights provided to the owner. It is right to reproduce the work. Here, wait. Here, you have rights to reproduce the work, distribute, broadcast to the public. Your registration is again optional and cost is very, very low. Now, and in patent, registration is compulsory required. It is only and only this option where registration, only in this option, it is compulsory plus it is high. Remaining both are optional and it is low. ठीक है, and that's it I guess. बाकी तो what you have to do, what comes under copyright, what does not comes under copyright. So you have to see the things which are covered under copyright, the things which are not covered under copyright, that you have to do. Only that list you have to do. So you can write only on this page if you want things which are covered, which are under copyright, and things which are not under copyright. Like covered, like example, drama, literary work, okay, music, sound, okay, some art, some artistic work, okay, some expression, of ideas. This is very, very, very important, this expression of ideas. क्यों? क्योंकि आपने express किया. But अगर आपके only and only idea है, idea, now खुशबू ने एक आइडिया एक्सप्रेस किया है कि यस ये इनका ओरिजिनल वर्क है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है, तो दैट विल बी कवर्ड, यस दैट विल बी कवर्ड अंडर कॉपीराइट. बट मैंने ऐसा बोला, हाँ ऐसा मेरा भी आइडिया था, तो क्या वो कॉपीराइट हो सकता है? नहीं, वो मेरे माइंड में था. व्हेन आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड इट येट, सो इट कैन नॉट बी कॉपीराइटेड. Okay, please make sure that you do this thing, that ideas cannot be copyrighted but the expression of ideas can be copyrighted. क्यों? क्योंकि वो express किया गया है, वो पूरी पोइट्री लिखी, उस पर लिखा बाय खुशबू, दैट्स वाई वो कॉपीराइट में कवर होगा. बट सिर्फ अगर हमारे माइंड में आइडिया है तो वो कॉपीराइट में बिल्कुल कवर नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज जस्ट इन आवर माइंड. सेकेंड थिंग विच कैन नॉट बी कवर्ड in the copyright is facts. We all know that when we got independence, when is the teachers day, when is the international teachers day, and when is the new year, when is the Christmas, when is Holi, when is Diwali, that is just fact. What is new about it? Like अगर आपने ओरिजिनली कहीं पर लिख दिया कि we actually celebrate, the next celebration will be Diwali after our exams, Dashera and Diwali, Navratri, and so on. So, is there anything new? No. That's why the fact is not covered. Okay. Any concept, idea, concept था, ठीक है आपके माइंड में है, या कोई प्रिंसिपल्स हैं, वो फैक्ट्स प्रिंसिपल्स आपके माइंड में है या ऑलरेडी स्टेटेड हैं, तो वो कवर नहीं होंगे, उसमें कुछ ओरिजिनलिटी नहीं होगी. कोई रेसिपी, वाई? क्योंकि रेसिपीज़ तो हम यूट्यूब से भी कॉपी करते हैं. अभी कोई भी मास्टर शेफ़ ये नहीं बोलेगा ये हमारी रेसिपी आपने क्यों बनाई, बिकॉज हर एक पर्सन अपनी अपनी रेसिपी बनाएगा घर पे. दे विल मेक देयर ओन रेसिपीज एंड दे विल सर्व टू देयर गेस्ट. ओके, एंड वर्क लैकिंग ओरिजिनलिटी, वेयर देर इज नो ओरिजिनलिटी, that will not be covered. Like example, slogans. Okay,
लिव एंड लेट लिव, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, all those slogans, ठीक है, fine, they are there. So if I have written in cursive writing or calligraphy, that will not be covered because that is not my original work. They are just slogans, they are used by someone else previously. Okay, so that's it. This second act is also done. Next 10 minutes में या okay 1 hour में basically we have completed 2 acts. Now shall we start Indian Contract Act, or you will be doing Indian Contract Act on your own? Decide, because if you are going to do, yes, that will be long, but you have to decide that you want me to do or you will be doing that, and I'll cover the small acts. You decide. मैम ये PDF कहाँ से मिलेगी? सागर, वैसे PDF तो आई हैव गिवन ओनली टू प्लस स्टूडेंट्स, स्पेशल क्लास के मतलब फ्री लर्नर्स के लिए यूट्यूब का कंटेंट ही है. कॉन्ट्रैक्ट यू डू? ओके ओके. GST please. Okay, shall we do GST? GST, come on, please say GST. Small please. Yes, okay, then only one thing will be left, like Contract Act you will be doing on your own. Okay, let's start with GST. Can anyone tell the full form of GST? Full form of GST थोड़ा करवाओ आप. हाँ ओके, तो पहले हम स्मॉल एक्ट्स करते हैं, देन अगर सबके पास एनर्जी होगी तब डेफिनेटली हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी स्टार्ट करेंगे, नो डाउट. हम आप सब कवर नहीं कराओगे? सब कवर आप देख लो, जब तक आप पढ़ सकते हो, जब तक हम पढ़ा सकते हैं तब तक हम पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. तो सी क्या अच्छे से प्लस, ओके, सी गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017. Fine. Okay. So 2017 में ये आया, it got started. First of all, there are two bifurcations. One is the direct tax, one is the indirect tax. Direct and indirect tax. अब मुझे बताओ, GST is a direct tax or an indirect tax? GST is a direct tax या indirect tax? Quickly tell me. Quickly tell me. No wrong answers. 10 days में you are having exam. I do not expect you to give wrong answer. GST is an indirect tax. Why GST is an indirect tax? आज चलने दो, ठीक है, आज चलते हैं. We will eat up all the time. Okay. Exactly, yes, that's what I feel. So खुशबू, contract act को हम last में रखते हैं after covering all the different things. अच्छा, so first indirect tax means what? GST. Direct tax में we have income tax, right? Okay, now I have one more question. Like, there is one tax which is known as a progressive tax and which is known as a regressive tax. इन दोनों में से कौन सा tax is a progressive and कौन सा is a regressive? This one is a progressive. Why progressive? कोई reason बताएगा? As we increase our income, as the income gets increase, so our income tax also increase. How come it increase? If a person is earning 6 lakh rupees, so they have to pay what? Approx 20% of their income tax. If they are earning, okay, if they are earning more than 10 lakh rupees, then they have to pay what? More than 30% of the income tax. Okay, if they are earning 50 lakh or 1 crore, then they have to pay what? Surcharge also. More than 20, okay, 2 crores also, then more surcharge will be there. Domestic company, foreign company, all those, okay, slabs will be also there. So as we increase our income, the slab rate actually increase from 5%. Then new slab rate, if you all remember, new slab rates are 5, 10, 15%, then 20, 25, 30%, and plus higher in education cess that we have to pay 4%, and plus on the top of that income tax plus higher education cess
on that we have to pay what surcharge to, ठीक है, as we increase our income. Now but GST, that's a regressive tax. Why regressive? Because it has nothing to do with कि आपने कौन सा क्वांटिटी और कितना अमाउंट का गुड परचेज किया. ओके, इस हाँ, इससे क्या क्या लेना देना है आपका जीएसटी में. जैसे चाहे अगर आपने एक मोबाइल परचेज किया जो कि जस्ट मे बी आपका 10,000 का है, या आपने एक कार परचेज किया जो कि आपका 10 lakhs का है, आपको दोनों केस में आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा. देर इज़ नो बाइफिकेशन कि आप ज़्यादा अर्न करते हैं या कम अर्न करते हैं, या ज़्यादा अमाउंट का है या कम अमाउंट का है. ओनली द परसेंटेजेस of the GST will differ. Okay, so what are the features of indirect tax? Features are basically, first, it is tax on, see, this GST or this indirect tax, this indirect tax, it is actually tax on goods as well as service. Okay, plus it is actually shifting burden on others. How come it is shifting burden on others? देखो shifting कैसा हो रहा है कि the seller is shifting the burden on the wholesaler, and the wholesaler is shifting the burden on the retailer, and the retailer is shifting the burden on the customer. So हमेशा कस्टमर ही कस्टमर में होगा, कष्ट में होगा. कस्टमर विल बी इन कष्ट. रिग्रेसिव कैसे? प्लीज एक्सप्लेन. ओके, रिग्रेसिव दैट मीन्स ऑल द कंज्यूमर. रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे कंज्यूमर्स इक्वली बर्डन शेयर करें. ऑल कस्टमर्स शेयर burden equally. Okay, getting it, Shweta? Yes or no? हाँ, कष्ट, exactly. श्वेता, गेटिंग इट? सारे के सारे कस्टमर्स बर्डन इक्वली शेयर करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो आप ज़्यादा जीएसटी देंगे. चलो आज आप 40% जीएसटी देंगे, और अगर कोई और आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव कम अर्न कर रहे हैं तो वो 5% जीएसटी देंगे. ऐसा नहीं होगा. ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव, दैट मीन्स डायरेक्ट टैक्स में होता है कि अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो आप ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन देंगे. बट जीएसटी में ऑल आर फेयर रेट्स. क्या होता है? बट रेट्स, अगर आप बोलते हैं कि रेट्स तो 6 रेट्स तो गुड्स के हैं, 4 रेट्स तो सर्विसेज के हैं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और वो भी तो अलग अलग हैं. वो गुड्स के अकॉर्डिंग है, वो सर्विस के अकॉर्डिंग है, वो अर्निंग के अकॉर्डिंग नहीं है. Those taxation are not according to the earning. Those slab rates are according to the goods and services that we are consuming. I hope you got that. Okay, now indirect tax mein we are shifting the burden on another person. Shifting burden on another person. Okay, plus what we are doing, there is no perception of direct pinch. How come? देखो कैसा, जैसे suppose the cost of this product is 100 rupees. Now the government is asking ki okay, pay on 100 rupees, pay 10% of the taxation, right? Okay, so now you are actually selling this product along with profit. Then after 10% you are adding, then you are actually selling this product to the wholesaler in 110 rupees. Now the wholesaler actually added 5 rupees ka value in that product. So the total price of that product will be 115. अब उस पूरे पे again there will be taxation, and again that tax will be shifted. अच्छा, either this or directly you can say 10 rupees तो retailer पे करेगा ही, plus 5 rupees पे जितना भी टैक्स बनता है वो भी रिटेलर पे करेगा. नाउ ये टैक्स, सपोज 1 रुपीज़ टैक्स बनता है, तो अभी 10 + 1 रिटेलर पे नहीं करेगा, he will charge it from the customer, and ultimately कस्टमर अल्टीमेट मनी पे करेगा. जितना भी होगा वो पूरा का पूरा ड्यू कस्टमर से लिया जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट. ओके, whatever amount is there.
ओके, ठीक है। नाउ custom duty paid on international shipment, custom duty is not coming under GST. Okay, now see, acha, when all these things started, it all started in 2000. It all started in 2000, GST formation, and the GST Act is formed in 2017, finalized in 2017 कि yes, 1st July 2017 से we will implement, and in Jammu and Kashmir it got implemented from 8th July 2017. Fine, okay. Now there are two concepts of GST. ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। अच्छा, कितना टैक्स बर्डन, ऑफ कोर्स आई फील लाइक कि एक तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन, फिर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन, अल्टीमेटली द कस्टमर इज कस्टमर, ओके, कस्टमर, ओके। सो नाउ concept of GST is like basically there you can say GST has certain points. What are the certain points? Like example first is what? Value added tax. So now GST is actually a value added tax ना, जितना भी wholesaler ने, like if the wholesaler has added 5 rupees का value in the product, so उस 5 rupees के value पे again 20%, again 12%, 18%, 28% again GST लगेगा. That's why it is what? Value added tax. Next is what? It is continuous chain of credits, मतलब total ये बर्डन शिफ्ट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा एंड अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर आएगा. दैट्स व्हाई इट इज अ शिफ्ट ऑफ बर्डन. Right? Okay. Now, next is it is borne by the final customer and there is no cascading. Now, this is a very beautiful thing that there is no cascading. Cascading का मतलब क्या हुआ? Cascading of taxes. इसका मतलब क्या हुआ? That means there is no tax on tax. मतलब in short, जैसे example, if the seller right now, suppose the seller is there, seller ने कितना 100 rupees का product सेलर आगे पास ऑन करना चाहता है, उस पर उसने 10% एग्जाम्पल 10% टैक्स लगाया, ठीक है, विथ प्रॉफिट 100 रुपीज़ आ रहा है. सो टोटल अमाउंट 110 ये रिकवर करेगा किससे? रिटेलर से. ओके, एंड नाउ सेलर या मैन्युफैक्चरर फाइन, ये रिटेलर से रिकवर करेगा. अब रिटेलर ने 110 रुपीज़ का परचेज किया, इसमें इसने 5 रुपीज़ का क्या वैल्यू ऐड किया. अब उस 5 रुपीज़ पे अगेन 20% टैक्सेशन है. सो सपोज 1 रुपी का टैक्स है, राइट. सो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? टोटल अमाउंट इसे भी तो 1 रुपी पे करना है, राइट. सो 110, इस 110 पर अलग से टैक्स नहीं लगेगा, ओनली वैल्यू पर टैक्स लगेगा विच इज वैल्यू एडेड टैक्स. सो इट विल बी 110 प्लस 5 प्लस 1, दैट मीन्स 116 रुपीज. अब दिस 116 rupees will be actually paid by the customer, okay, which will include ओनली एंड ओनली ये वाला 10 रुपीज़ प्लस जो रिटेलर ने जो रिटेलर को जो 1 रुपी टैक्स देना था, ओनली दीज टू टैक्सेस. दिस 1 रुपी दिस 20% इज नॉट ऑन द होल, इट इज एक्चुअली नॉट ऑन द होल. I hope you can understand, it is not on the whole amount, it is just on the value added tax. So there is no cascading, that is there is no tax on tax. It is not putting tax on 115 rupees, it is just putting additional tax on the additional value added, that is 20%. Okay, okay, getting it? So that's how you can see, just because there is no cascading effect like the previous indirect taxes, that's why GST ultimately collects lesser tax as compared to the other indirect taxes. क्या आपको समझ आ रहा है? Yes या no? मतलब पहले जब हमारा एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स ये सब लगता था, तब टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता था, जिसमें अमाउंट और ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता था. अब सिर्फ और सिर्फ जितना वैल्यू ऐड किया है उसी पर ही
उसी पर ही उतना परसेंटेज टैक्स लगाया जाता है, तो अल्टीमेटली जो हमारा नेट पेमेंट आता है वो इट इज़ लेस देन द टैक्सेस विच वर इम्प्लाइड, विच वर implemented on us before. I hope you all are understanding. Old system में हम definitely ज़्यादा pay कर रहे थे as compared to the new system, and now the GST has actually subsumed all the things except the custom duty. Fine, so that's it. And in India कौन सा GST system चलता है, सिंगल GST या ड्यूअल GST in India? India actually follows dual GST system. How come? क्या है dual GST पे GST? No, one side 50% of it is collected by central, and 50% of it is collected by what? State. Okay, that is the dual benefit. Okay, now what is now we'll just consider that what is this CGST and SGST. This central is considered, it is known as CGST, that is Central Goods and Service Tax, and this is known as what? SGST, that is State Goods and Service Tax. Now and there is another one, like suppose if you are not buying and selling exactly in the same state, then what will be applied on us? It will be IGST. You can see, if you are selling and buying in the same state, then two bifurcation will be there, that is CGST and SGST. And if you are buying and selling in a different state, different, then what will be applied on us? IGST will be applied on us. Okay, France is the first country. Oh wow, now nice. Okay, IGST. And now IGST will go to the center or state? Of course it will be going to the center. If it will go to a state, then all the states will fight ki no, the buyer state and the seller state will fight ki which state will keep the money. Getting it? Yes or no? Now there is a split just because same state and different state, and as it is written in GST, one nation one tax, that is why only and only one GST is there, which is actually subsuming all the other taxes except the custom duty. One nation one tax. Fine. Okay, now there is list of 8 union territories. If you've seen कि एक तो IGST होता है, एक होता है UTGST, that is Union Territory Goods and Service Tax. So which 8 union territories are there? You should remember that. First one is Lakshadweep, second is Andaman and Nicobar Islands, third is Dadra and Nagar Haveli, fourth is Daman and Diu. Okay, next is what? Chandigarh. Okay, Daman and Diu. Next is what? Chandigarh. Next is what? Ladakh. Next is Puducherry, Pondicherry, Puducherry, and next is what? Delhi. Okay, please see. First is Lakshadweep, L for Lakshadweep, L for Ladakh. Okay, L for Lakshadweep, L for Ladakh. D for Daman and Diu, and D for Dadra and Nagar Haveli, and D for Delhi. So 2 are from L, 3 are from D, and these C is Chandigarh. Okay, and A for Andaman and Nicobar Islands, and P for Puducherry. Getting it? Yes or no? Yes or no? Can you all recall again? First, one L is for Lakshadweep and L is for Ladakh. Lakshadweep, Ladakh, 2L. Okay, one is Daman and Diu, and one is Dadra and Nagar Haveli, and one is D for Delhi. ये हो गए 5. Remaining 3 are, one is Andaman and Nicobar Islands, one is Puducherry, and one is Chandigarh. Okay, Chandigarh. Getting it? So 2L, 3D, and then the remaining different letters. Very nice. These all you have to remember. Okay, now you have to do the
you have to also learn this, though you have to learn, yes, of course. Another thing you have to learn is percentage. One is the percentage, like I told you that there are 6% for CGST and SGST. Okay, that means if uh, 6 not percentage, this one is wrong, 6 rates will be the correct thing. 6 rates, fine. And here we are having 4 rates in case of IGST. No, wait, कुछ गड़बड़ है. Wait, 6 rates for CGST, SGST, IGST for goods. Yeah, हाँ, अब सही है, right? And 4 rates of all these things, that is IGST, CGST and SGST for services. No, they are not the slabs. Please don't call them as slabs, because slabs means what? Kahin se kahin tak. And slabs exist only and only in income tax. They are known as what? Popularly known as what? Rates. Okay, so let's write all the rates. First one, dekho. For the goods and very nice, very nice, very nice. You forgot. What you forgot? 0%. You remember? Wait. We'll just recall all the things. Okay. So first one is you can say 0.25%. Fine. 3%. Okay. 5%. 12%. 18% and 28%. ठीक है, आपको क्या याद था? 8 और थोड़ा सा गलत हो गया, राइट? आपका कोई बात नहीं, आप ये कर दो, दैट इज 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% and 28%. Okay, these are the 6 rates. Now you are saying हाँ एक 0% भी है, right. I think something is changed, right? 0.25 and 3% you are saying it got changed to only and only 0%. Services mein to it is same, right? What services mein it is same, that is one is your 5%, 12%, 18% and 28%. ठीक है, that's it. 15 से 18 हो गए. हाँ, 18% तो है ही, 15% I have not written anywhere. 0% नहीं आएगा. 5, 12, 18 and 28. ठीक है, these 4 rates will be in the services. Now you can see, suppose if there is a CGST or SGST. So CGST and SGST में क्या चीज़ है कि this will be 50-50% collected by both the parties. So one will be 0.0125%. ठीक है, this will be 1.5%, this will be 2.5%, this will be 6%, this will be 9% and this will be what? 14%. Now maximum cap what a company or a product can keep in India, what is the maximum cap? It is 40%. Please remember, for goods or services that is maximum allowable. कि कितना अमेंडमेंट के बाद अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017, अकॉर्डिंग टू द एक्ट कितना आप मैक्सिमम रख सकते हैं? 40%. नाउ द एग्जाम क्वेश्चन इज कि कितना मैक्सिमम अलाउड होता है? 40%. बट
अगर एग्जाम में ये पूछे कि कितना मैक्सिमम अलाउेबल होता है CGST में या फिर SGST में, तो आप क्या लिखेंगे? 20%, दैट इज द मैक्सिमम अलाउेबल, क्योंकि इंडिविजुअली तो 14% है, बट ओनली CGST में मैक्सिमम अलाउेबल कितना है? कोई भी इंक्रीज करके कितना कर सकता है? आफ्टर अमेंडमेंट्स ऑल्सो 20%, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इफ इट इज रिलेटेड टू IGST और UTGST, then 40% will be your answer. Okay. हाँ, प्लस नोट से कुछ चेंजेस हैं क्या मैम? नहीं 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 नहीं, प्लस नोट्स में एग्जैक्टली सेम रेट्स हैं, यही यही रेट्स हैं। Okay, is it okay? Now next one, if you are saying that 0% also, yes ma'am, repeat. हाँ, okay. So Shweta, in your exam, suppose Shweta, in your exam suppose it comes कि बताओ मैक्सिमम अलाउेबल CGST या SGST कितना होगा, या सपोज इन योर एग्जाम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम अलाउेबल GST एक्ट के अंदर कितना GST रख सकते हैं, मैक्सिमम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी कंपनी कितना रख सकते हैं आफ्टर अमेंडमेंट इन फ्यूचर, तो दैट विल बी 40%। 40% के ऊपर तो आप टैक्स नहीं कर सकते, total is 40. Now you know that GST is collected if it is sold and purchased in the same state, then it is 50-50 percentage collected by CGST and SGST. तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रिटन है दैट मैक्सिमम अलाउेबल CGST कितना हो सकता है, तो 20%, मैक्सिमम अलाउेबल SGST कितना हो सकता है, 20%, मैक्सिमम अलाउेबल GST कितना हो सकता है, 40%, मैक्सिमम अलाउेबल IGST कितना हो सकता है, 40%, मैक्सिमम अलाउेबल UTGST कितना हो सकता है, अगेन 40%, okay, but CGST and SGST 20% और only GST लिखा है तो 40%. Getting it? Now our last question, our last very important thing is very important question is कि कौन से प्रोडक्ट पे GST लगता है, कौन से प्रोडक्ट पे नहीं लगता है, on which products we have GST, on which products we don't have GST. Suppose if I do not mention any product or service any goods or service in list here, मतलब उस पे क्या होगा, उस पे GST लगेगा, ओके। UTGST के साथ नहीं, दैट इज यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन यू कैन से, हाँ, राइट, नाउ गॉट इट। सी इफ आई डू नॉट मेंशन, अच्छा ठीक है, स्पेसिफिकली UTGST के लिए इज नेवर आस्क्ड, सो यू मे रिमूव दिस, fine, no controversies, fine, you just put, see, if I do not mention any goods and service in the list below, then that means उस पे GST लगेगा, right? Now what are the products or service जिस पे GST लगता है या नहीं लगता है, कौन से controversies में है? अगर मैंने लिखा अल्कोहल, मुझे बताओ क्या इस पे GST लगता है, GST राइट नाउ नहीं, राइट नाउ नो GST, क्यों? क्योंकि जो स्टेट है, स्टेट्स सारे के सारे स्टेट्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं अल्कोहल से, क्यों? स्टेट हैज द पावर, क्यों वो GST के हाथों जाना चाहेंगे, क्यों वो GST को रेवेन्यू अपना देना चाहेंगे? स्टेट हैज पावर एंड स्टेट in future also states are planning to keep this power, they don't want to dilute this power, okay, because अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ATF you said, okay, so 5 petroleum products,
जैसे कि कौन कौन से हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, एटीएफ, व्हाट इज एटीएफ, किसी ने बोला एटीएफ, एविएटेड टर्बाइन फ्यूल, ओके, पेट्रोल, भाई बहुत अच्छी अर्निंग होती है, वाई टू गिव दिस टू दिस जीएसटी, नेचुरल गैस, वो सीएनजी वाली गैस जो होती है ना, वो नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, गैस, एविएटेड टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, क्या इन सब पे जीएसटी अभी है, लगता है राइट नाउ तो जीएसटी नहीं है, नो 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 नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो जीएसटी काउंसिल है ना, वो अभी भी जीएसटी का डेट डिसाइड करेगी, ओके, जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड डेट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास है एंटरटेनमेंट, या इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं, ओके। सो अब एंटरटेनमेंट, जो सारे ये जो बॉक्स ऑफिस एंड ऑल ये सब लगाते हैं, तो ये सब लोकल बॉडीज जितना भी अपना मूवीज पुट करते हैं, म्यूजिक, लाइव शोज, तो उस पर जस्ट अभी जीएसटी नहीं है, ये अभी भी लोकल बॉडीज के ही हाथ में है और लोकल बॉडीज ही कलेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल buying and selling of goods and services, your entertainment में specifically you have to visit to that place to get that service, and now someone is giving that place कि हाँ ये मैच हो जाए, ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो जाए, ये मूवी हो जाए, तो उस प्लेस पे जाके कंज्यूम करना पड़ेगा, तो वो जीएसटी के हाथों तो नहीं देना चाहेगा, डेफिनेटली उसे जीएसटी के हाथों में नहीं जाना है। लास्ट इज आर टोबैको, क्या उस पे जीएसटी लगता है, जीएसटी, यस ऑफ कोर्स, यस, ओके, क्यों, यस जीएसटी पे लगता है, और प्लस एक्साइज भी लगता है, डबल टैक्सेशन होता है, ठीक है, बोथ, यस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस है, ठीक है। सो 4 कैटेगरीज, जीएसटी अल्कोहल पे नहीं लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता है, एंटरटेनमेंट पे नहीं लगता है, बाकी सब पर लगता है, इंक्लूडिंग टोबैको पर जीएसटी लगता है, और जो मैंने प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं किए हैं उन सब पे जीएसटी लगता है। एग्जाम्पल, हेल्थ केयर सर्विसेज, एग्जाम्पल एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच वी आर बाइंग और सेलिंग, अगर कोई रेट नहीं होगी, 0% रेट होगी, कुछ तो होगी, कोई रेट होगी, या वो फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा, बट एटलीस्ट जीएसटी के परव्यू के अंदर वो ऑलरेडी है। ओनली ये 3 थिंग्स, दैट इज अल्कोहल, पेट्रोलियम एंड एंटरटेनमेंट, जीएसटी के बाहर है। टोबैको क्या जीएसटी के अंदर है? यस, पर टोबैको पे जीएसटी के साथ साथ एक्साइज यानी मैन्युफैक्चरिंग पर भी टैक्स लगेगा। दैट्स इट, जीएसटी फिनिश। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्ट। अच्छा, if someone has not clicked on the like button, please click on the like button now. Please click on the like button of this video. Till now we have completed so far what we have completed: SOGA and GST, to good tax, and IPR also. पेन पे भी लगता है, yes, of course पेन पे भी लगता है। now our next act is what? Competition Act. अच्छा, now Competition Act, फूड इन रेस्टोरेंट, यस ऑफ कोर्स फूड एंड रेस्टोरेंट पे पहले सर्विस टैक्स एंड वैट दोनों था। क्यों सर्विस टैक्स एंड वैट दोनों था? क्योंकि जो हमने फूड कंज्यूम किया, अभी हमने कुछ फूड खाया, तो उसमें हमारे पास फूड पे वैट लगा जो कि गुड्स है, और जो वेटर ने हमें सर्विसेज दी उस पे हमारे पास सर्विस टैक्स लगा। ओके, नाउ what you are saying, ma'am, RTI, अच्छा, RTI you want to do, oh my god, good selection, चलो ठीक है। मैम ये सब प्लस पे नहीं करवाओगे? हाँ करवाऊंगी ना, डेफिनेटली, मैंने पास्ट में भी प्लस पे करवाया है। एंड श्वेता आपका एग्जाम कब है?
आई गेस आपने प्लस पे अभी अभी ज्वाइन किया होगा, राइट? ये सब मैं प्लस पे करवा चुकी हूँ. दिस इज जस्ट अ रिविजन विच इज लाइक योर एग्जाम विल बी आफ्टर फ्यू डेज ना, दैट्स वाई. ठीक है, RTI आप कर लो, RTI 2005. Very nice. Okay, now RTI is a very, very, very small act that is, you can say, no, 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 it's not 2002. Who is, acha, okay, who is saying 2002? नहीं, 2005 RTI Act. कौन सी डेट को आया? अगर किसी को डेट याद हो तो 12 अक्टूबर. 12 अक्टूबर. आज 12 सितंबर है ना. सो जस्ट एक महीने बाद, 1 मंथ के बाद, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 is the date of the Right to Information Act. Why this act actually started? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस मोहिनी. मोहिनी, फर्स्ट हम RTI एक्ट करें. शायद आपका लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चल रहा है, तो आप एक बार लाइव पे आ जाइए रिफ्रेश करके. ओके, वी हैव स्टार्टेड RTI एक्ट. सो व्हाई दिस RTI एक्ट एक्चुअली स्टार्टेड? जब भी हम ह्यूमंस को, हम इंडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब गवर्नमेंट सारी चीज़ें सब ऐसे छुप छुप के तो नहीं करेंगी. दे विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम अस. They will tell us ki yes, okay, there will be a participation, there will be transparency, there will be legitimacy, there will be responsiveness. Basically all the information we as the citizens, we have the right to get the information. Okay, information. Okay, right टू गेट इन्फॉर्मेशन. क्यों इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए? क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हम एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमने सब कुछ सेलेक्ट किया है दैट हु शुड बी द लीडर, हाउ द कंट्री शुड रन, व्हाट ऑल डिसीजन शुड बी टेकन फॉर आवर बेनिफिट. तो हमारे पास ये एक राइट भी होना चाहिए कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो एटलीस्ट डिफेंस से रिलेटेड नहीं हो. ओके, not related to defense, I must say. Then हमारे पास बाकी सारे राइट्स हैं कि हम उन इंफॉर्मेशन को ले सकें, हम उन इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें. ओके, एंड वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हमारे पास राइट्स हैं. अभी डिफेंस से रिलेटेड क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर सपोज करो मुझे चाहिए, मैं एक कंट्री की इंफॉर्मेशन, लाइक यू नो, कहीं भी किसी भी कंट्री की इंफॉर्मेशन अगर मैं डिफेंस से रिलेटेड लेके किसी और कंट्री को सेल कर दूँ तो ये गलत हो जाएगा. दिस विल बी वेरी वेरी बैड. ओके, सो दैट्स वाई. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इतिशा हैज ऑल्सो सेड वेरी नाइस. यू हैव रिमेंबर दिस वे कि देखो गांधी जी का बर्थडे, दिस वी हैव डन इन प्लस लाइक दिस. गांधी जी बर्थडे दैट इज 2 अक्टूबर. जब कौन गए थे? पणजी गए थे. दृश्यम मूवी में पणजी गए थे ना 2 अक्टूबर को, राइट? सो गांधी जी का बर्थडे प्लस 10 days. दिस डेट एक्चुअली केम इन योर PYQ as well. Okay, very nice. Right to seek redressal, right to get information from public information officer, that is known as what? PIO or APIO. What are the objectives? That means, see, first, what are the objectives? First, to empower the citizens, the empowerment of the citizens, right to get the information, to make government systems more transparent, accountable, to prevent and eliminate all the corruption. There should be no corruption. ऐसा नहीं है कि आज मन किया, आज हमने ये रूल लागू कर दिया. आज हमें मन है कि हम GST पे 50% टैक्स लगाएं और हमने लगा दिया और लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं किया. ठीक है. एंड टू मेक डेमोक्रेसी वर्क बेटर डेमोक्रेसी, इस चीज़ के लिए. ओके, नाउ अब क्या है कि अभी देखो, देर आर टू पीपल who can provide us information. एक तो आपने बोला PIO, that is known as what? Public Information Officer, isn't it? देखो, public information
ऑफिसर। अभी अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या उन्होंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया या ही इज बिजी, some cases are there one person cannot provide, so APIO can provide the information, that is assistant sorry APIO can provide our information, and we'll study one by one that what are there and how we can provide or how we can get the information. First is what? First, suppose Bhojanti, suppose Ashwati, you want some information now. So you will be going to that site, government site, RTI site to get the information. Now you just have to write your name and you just have to ask for the information. Nobody, please note down this thing, nobody will ask you the reason that why you want this information. ठीक है? और no obligation, like you can say authorities are not obliged to provide the information which is received in the confidence like defense and all that, but अगर आपको कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोई भी रीज़न आपसे नहीं पूछेगा, जस्ट नेम, हाँ ऑल्सो द कॉन्टैक्ट नंबर, वेरी नाइस, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बताई कैसे जाएगी, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड ओनली द इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू आस्क, विदाउट एनी क्वेश्चन यू विल गेट टू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन. ठीक है? नाउ द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन that you have to do, yes of course, please do the definition of information because that comes in your exam, that it includes what all things, it does not include what things. ठीक है? So see, information, मुझे पता है आप इस पे सेपरेटली टाइम स्पेंड नहीं करने वाले, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू द इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन ऑल्सो, दैट इज व्हाट इट इंक्लूड्स. कैन आई सी, फर्स्ट इज व्हाट रिकॉर्ड्स, देखते हैं व्हाट वी ऑल रिमेंबर. फर्स्ट इज रिकॉर्ड्स, सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, देन इट इज मेमोज, ओके, देन इट इज ईमेल, देन ओपिनियन, okay, advices, okay, then what, press release, circulars, okay, orders, logbooks, contracts, okay, reports, papers, press release के सामने I'm writing papers because P for press release, P for papers. Same way, contracts, see, contracts I'm writing near circular, that is C for circular, C for contracts. ठीक है? और लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स हो गया, सैम्पल्स, ओके, लेट्स राइट सैम्पल्स टू, मॉडल्स, मेमोज, मॉडल्स, फाइन, एंड डेटा मटेरियल, ओके, सो D for document, D for data material, okay, or held in any electronic form or information relating to, कुछ information, very nice, okay, so please see, हाँ please see, कुछ चीज़ें what I have written, कुछ चीज़ें I have written with this कि देखो, R for records, R for reports, D for documents, D for data material, M for memos, M for models, P for press release, P for papers, C for circulars, C for contracts. Okay, remaining you have to do, like you have to read. Remaining कितने बचे? Only 4-5 बचे. Only 4-5 are left कि emails, opinions, advices, orders, logbooks, samples. Please say it. Emails, opinion, advices, orders, logbooks, samples. Email, opinion, advices, orders, logbooks, samples. That's it. ठीक है? Please say it like this. Emails, opinion, advices,
orders logbook samples. Why so? Because two times they have asked till now, two times. Okay, they have asked that what all things are included in the information and what all things are not included in the information. So this way if you write, it will be very beneficial for you. Okay, can you read it again? Email opinion advices, orders logbook samples. Okay, file noting will not come because I have not written, and that was asked in your question, and date was also asked. Now, who is a PIO? PIO is actually a public information officer, isn't it? A PIO is a public information officer, as we have already discussed. And what, Achana, PIO actually officer who are designated by the public authorities in all administrative units. So these PIO are appointed in different administrative units. They are having different jurisdiction. Okay, now, and they provide, like, according to that jurisdiction, they will be dealing with that information. So how PIO will be dealing with the information? They seek for no file noting. Yes, file noting you have to exclude. Very nice, Ashwati. Correct. Awesome. Nice. Great, Atisha. Now, they actually get the information. Then offer reasonable assistance to the applicant. So, sorry, they get the request for the information, then they offer the reasonable assistance to the applicant. If the request does not come in their own jurisdiction na, then they pass on that to different PIO who is having the same or similar kind of jurisdiction. Okay, what is the application fees? Total application fees 10 rupees is the application fees. Fine, application fees. Okay, now, and if you want to access, if you want to get, suppose A3 A4 size, suppose if you wanted paper form, then you have to pay what, rupees 2 per page. Okay, that's it. And larger size, if there is larger size, then actual cost of the copy, sample models, actual size of the copy. And if you want something in printed form, again 2 rupees per page of the photocopies. Inspection fees, like no fees for the first hour. Inspection, no fees for first hour, and then remaining hours के लिए 5 rupees per hour. Next 5 rupees per hour next hours के लिए. Getting it? Application fees is 10 rupees, that came in your exam. If you want a printout, that will be 2 rupees per page. If you want to do inspection first hour के लिए no fees, next के लिए 5 rupees per hour will be the fees. Okay, floppies ka I'm not writing because floppy disk I think that is a very rare thing now. ठीक है, floppy disk. Now, sections. See, section 3, all citizens have the right. Section 4, that is proactive disclosure by the authority. 6, obtaining information. 7, how the request will be treated. 8, the exemption. 8 is for exemption. Okay, 11.1 is for third party info. Okay, then 19.1 is for first appeal. 19.2 is for second appeal, and section 20 is for penalty. Okay, make sure that at least you remember these three and this, at least this one. Okay, yeah, 6 बजे no class. ये class है ना, this class is there, चल रही है, चलने दो जब तक you all are willing to study, जब तक you all are revising, you stay tension free. I just want this. Okay, that is, see, 8th is exemption, 19 is first appeal, 19.2 is what second appeal, and 20 is what penalty. Okay, now how the request will be made?
See, I'm just quoting the steps and I'm not writing any steps. First, see, फर्स्ट क्या क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम कौन सा पर्सन जाएगा? सपोज किसको इन्फॉर्मेशन चाहिए? इतिशा, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? 20 पेनल्टी। 6 बजे कहाँ? पता नहीं, पता नहीं ना। अभी है, अभी देखो, इतिशा है, इतिशा को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इतिशा आए है गवर्नमेंट साइट पे एंड शी इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम PIO। अब PIO क्या कर रहे हैं? अभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने राइटिंग में दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया, ठीक है। अब सपोज इफ PIO कैन टेल, तो PIO भी राइटिंग में देंगे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देंगे? या तो बाय पोस्ट देंगे इन्फॉर्मेशन या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देंगे। कौन सी लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन होगा? देखो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, या फिर कोई यहाँ वहाँ पे जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन। और इतिशा को और क्या देना होगा? फीस देनी होगी। कौन सी फीस देनी होगी? एप्लीकेशन की 10 रुपीज़ की फीस देनी होगी, और अगर प्रिंट आउट चाहिए तो 2 रुपीज़ पर पेज, और अगर इंस्पेक्शन करना है तो फर्स्ट आवर के लिए फ्री और नेक्स्ट आवर के लिए 5 रुपीज़ पर पेज के लिए आपको उतना फीस देना होगा। और ये पर पेज फीस है, मतलब अगर आपको 60 पेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 120 प्लस 10 रुपीज़, दैट इज़ 130 रुपीज़ अभी आप दे दो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। पर प्रिंट आउट में मिल जाएगा। पर इतिशा, क्या आपसे कोई रीजन मांगेगा? नहीं, कोई रीजन नहीं मांगेगा। दैट वाज अ क्वेश्चन इन एग्जाम ऑल्सो, नो रीजन आस्क्ड एंड नो पर्सनल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, ईमेल एड्रेस भी जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए तो कोई ईमेल एड्रेस तो होना चाहिए, राइट। एंड सपोज अगर वो उस जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो कितने डेज में ये केस ट्रांसफर होगा? ये होगा 5 डेज में, 5 डेज में ट्रांसफर, विद इन 5 डेज। ओके, नाउ अब आपको PIO इंफॉर्मेशन कितने डेज में दे सकते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई गेस। दैट इज फर्स्ट, आपको 30 डेज में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मतलब PIO आपको 30 डेज में इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर API हो है, दैट इज असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो वो 35 डेज में इंफॉर्मेशन डिस्पोज करेंगे, मतलब मैक्स टू मैक्स इतना टाइम ले सकता है। और अगर ये किसी लाइफ आपसे रिलेटेड जो भी हैं उनके लाइफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो विद इन 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मतलब PIO आपको 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन देंगे ही देंगे। ओके, 30 days is the time limit for PIO, 35 days is the time limit for APIO, and 48 hours is for life and liberty at stake। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब उसे क्या माना जाएगा? डीम टू बी रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन। हाँ, 2 days मतलब ऑफ कोर्स 2 days। लाइफ रिलेटेड, नो भोजनती, लाइफ से रिलेटेड है तो थोड़ा जरूरी होगा ना मामला। 40 डेज आप कहाँ चले गए? 48 आवर्स बहुत ज़रूरी मैटर होगा। 40 डेज तो फिर कैसे? 48 आवर्स इज द इमरजेंसी। नहीं दिया तो इसका मतलब उसको रिफ्यूज्ड माना जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन रिफ्यूज्ड है। फिनिश, ये एक्ट भी डन। हाँ, 48 आवर्स, 48 आवर्स, कोई 45 डेज नहीं लिखेगा। 48 आवर्स, क्योंकि वो लाइफ और डेथ से रिलेटेड है तो वो 48 आवर्स में डिस्पोज होगी। ओके, डन, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट, सी वेट, क्या क्या चीज़ हो गई? LLP का ईयर हो गया, मैं मान लूँ LLP हो चुका है, या ठीक है चलो, सोगा तो एटलीस्ट हो चुका है। ओके, एंड और क्या हो चुका है? IPR हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, IPR वीपो हो गया, ओके, एंड GST हो गया, ठीक है। NI एक्ट,
मेरे घर वाले शौक है मैं पिछले 2 आवर से एक ही जगह पे कैसे बैठी हूँ. That's so nice, so nice, so nice. Awesome. Okay, now, would you like to do negotiable instrument act? हाँ, GST तो डन. कंपनीज एक्ट तो टीनी मिनी माइनी. Ma'am, now NI, हाँ. WIPO is done. WIPO is done. Negotiation Instrument Act. Would you like to do that? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Come on. Do you have? क्या है आप में इतनी हिम्मत कि आप नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट करें? कम ऑन प्लीज टेल मी. जीएसटी तो हो गया ना, कर लेंगे. हाँ, आईटी एक्ट में मैं क्या समझाऊं. आईटी एक्ट में देखो, आईटी एक्ट में पर्पसली मैं नहीं करवाना चाहती हूँ. उसका बताऊं मैं रीज़न क्या है. बिकॉज देखो उसमें पूरा का पूरा थ्योरी है. इट्स लाइक कि पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से भी कुछ नहीं होगा. द बेस्ट थिंग इन आईटी एक्ट इज टू रीड योर सेल्फ. So negotiable instrument act will be the best thing I think we can do, and then we can wrap up. क्योंकि उसके बाद तो क्या ही बचा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपटीशन एक्ट, बस दैट्स इट मे बी. हाउस द जोश. हाय. ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक है, तो आप अगर आपके घर वाले शौक हो जाए तो उन्हें एक बार हाय बोल के आ सकते हैं जब तक मैं हेडिंग लिख रही हूँ. या आप मुझे ईयर भी बता सकते हैं. मैं एक्चुअली क्या मैं ईयर भूल गई हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का. कैन एनीवन हेल्प मी आउट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. प्लीज़ कोई रियल मत समझना, मुझे सारे ईयर्स याद हैं. दैट इज़ 8081. ओके ओके. सो नाउ अगर आप मुझे डेट भी पूछेंगे तो मुझे वो भी याद है, 1 मार्च 1881. ओके. सो नाउ होनी यही आएंगे. भगा दिया. ओके, 1881. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, और अगर आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है इस लेसन में, प्लीज़ प्लीज़ यू कैन टेक दैट टाइम. प्लीज़ इनवाइट योर फ्रेंड्स टू. No one believe. Okay. Okay. See, great. अच्छा, that's great. Okay, so see, negotiable instrument act. देखो क्या है. इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट मार्च 1881. इसमें ना मुझे एक चीज़ याद है, दैट इज सेक्शन नंबर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज 4, 5 and 6. So I have heard that there were few kids who were very much involved in playing what PUBG. जब PUBG बैन नहीं हुआ था तो PUBG जो था ना, उसकी जगह we are going to study what PUBG. That is P for promissory note, B for bill of exchange ना, and C is for check. अच्छा, जो भी अगर चेक की स्पेलिंग CHECK लिखेगा दैट इज़ टोटली रॉन्ग. मैंने ये देखी है, किसी ने लिखी है CHECK, ये गलत है. CHEQUE इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, सो PUBG की जगह PUBG वी आर गोइंग टू डू. ना मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, क्या आपको ऐसा लगा कि इन तीनों में से कहीं मुझे कैश लिखना चाहिए? क्या आपको कहीं कैश इन सब में दिख रहा है? नहीं. मतलब कैश क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है ना. कैश तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट. ओके, कैश इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. प्लीज ये ध्यान रखिए, कैश इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ओके, देखो. ओके, ग्रेट. अच्छा, तो आई कैन सी किसी किसी का मोबाइल डेटा ओवर हो गया है, राइट? और मे बी नाउ दे आर टायर्ड. No? If no, then please comment. Please tell me. Okay. So negotiable instrument में cash नहीं आता है, सिर्फ promissory note, bill of exchange and check आते हैं. These are the 3 instruments which are there. Now you can say negotiable are actually, now see, we'll just do the category that what is a promissory note, what is a bill of exchange and what is a check. Now promissory note.
Who will become seller in our class right now? Kalpana. Kalpana, Kalpana, Kalpana is a seller. Who is a buyer? Buyer. I want one buyer also. Tehreen. Okay. Tehreen is the buyer. Okay. Now, अब क्या है कि कल्पना एंड तहरीन दे नो ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो क्या है, तहरीन वेंट टू कल्पना शॉप टू बाय व्हाट, टू बाय अ वेरी नाइस केक और ड्रेस. ओके, केक और ड्रेस. अब क्या हुआ कि जब ड्रेसेस बाय किए तहरीन ने, तो तहरीन ने बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं बाद में पे कर दूंगी. अब कल्पना सेज कि हाँ बाद में तो ठीक है, पर आपको अमाउंट याद कैसे रहेगा? आपका अमाउंट जो ड्यू है ना, वो ₹537 है. अब कैसे याद रहेगा? तो तहरीन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अपने में तो चलता है ना, मैं क्या करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ. I promise that I will pay this 537 rupees or 1537 rupees, okay, or 15370 rupees, whatever is the rupees, okay, to you after a particular period of time. So who is making that promissory note? Tehreen is making the promissory note. The buyer is writing, okay, the promissory note, yeah, without any condition. So who is making that promissory note? The buyer is making the promissory note. Now in the reverse condition, suppose there is a bill of exchange. हम अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं. तहरीन के पास कुछ प्रॉमिसरी नोट ऐसा कुछ नहीं है. तहरीन सेज कि क्या प्रॉमिसरी नोट, मान जाओ ना कल्पना, प्लीज बात मान जाओ ना, मैं बाद में पे कर दूंगी. तो कल्पना सेज हाँ वो सब तो ठीक है, मैं खाली एक इनवॉइस आपको दे रही हूँ. कल्पना इज सेइंग, सेलर अब शी इज सेइंग कि मैं ना आपको एक इनवॉइस दे रही हूँ 15370 रुपीज़ का. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है तहरीन, आपको खाली साइन करना है, आपको खाली एक्सेप्ट करना है कि ये आपकी लाइबिलिटी है. ओके, तो शी इज गिविंग टू द बायर. हु इज द मेकर हियर? The seller is the maker, and here who is the maker here? The buyer is the maker. Who is writing here? Buyer is writing. And who is writing the bill of exchange? The seller is writing. Okay, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. बिजनेस में नो दोस्ती. या ओके, ऑफ कोर्स. ठीक है, तो हाँ, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे बायर ने साइन करके खुद ही, सी तहरीन का साइन, कैन यू सी तहरीन का साइन, तहरीन ने साइन करके दे दिया. कोई तहरीन की साइन कॉपी नहीं करेगा. दिस इज तहरीन की साइन. एंड यहाँ पे ये सेलर ने बायर को दिया कि बायर एक्सेप्ट योर लाइबिलिटी. एंड देन अगेन तहरीन ने सेम साइन करके एंड अगेन कल्पना को दे दिया. शी एक्सेप्टेड हर लाइबिलिटी. ओके, नाउ सी, so it may be negotiable instrument, basically it may be payable to the bearer or to the order. नहीं करेंगे, ठीक है, great. So see, negotiable instrument are payable to the bearer or to the order. See, bearer कैसे? जैसे एग्जाम्पल, चेक है अभी, ओके, चेक है अभी. क्या है, तहरीन ने एक चेक बना के दिया कि हाँ पैसे पे करने हैं ना, ठीक है मैं साइन करके दे देती हूँ, तुम एनकैश करा लेना. नाउ तुम ले लो, ठीक है, बस कल्पना तुम ये चेक रख लो, ओके, तुम एनकैश करा लेना. अब कल्पना ने बोला कि हाँ ओके, पर इस चेक को ना क्रॉस मत करो, डोंट डू क्रॉसिंग ऑफ द चेक. एंड क्योंकि ना कल्पना बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट को भेजूंगी बैंक में जिसके पास ये चेक रहेगा. तो दिस इज लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन टू द बेयरर. जिसके हाथ में चेक होगा उसको पैसा मिल जाएगा. अब बीच रास्ते में अगर ट्विंकल को ये चेक मिल गया तो ये पैसे ट्विंकल के हो जाएंगे. यस ऑफ कोर्स, ट्विंकल भी इसे इनकैश करा सकती है, ठीक है, शीलू भी इसे इनकैश करा सकती है. ओके, जिसे भी ये चेक मिल गया वो इसे इनकैश करा सकते हैं. छोटू को, राइट, हाँ, सो छोटू को देंगे. ओके,
अफसर, आप अपने बायर और सेलर अलग से लेके आए हैं कमेंट सेक्शन में, आई कैन सी। व्हाट इज दैट? है ना? ओके, तो बेसिकली टू द बेरर और द ऑर्डर। हाँ, ट्विंकल के बर्थडे पे दे देना, ठीक है, डन डन डन। ओके, नाउ so see, bearer or the order. Now you can say negotiable instrument. हाँ, sections तो you have done. Sections you are. What are the features of negotiable instrument? हाँ, first feature is it is freely transferable. क्यों, कैसे? क्योंकि कल्पना ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट को या फिर वो छोटू को दिया ना कि हाँ ओके, चेक को इनकैश करा लेना, तो ये फ्रीली ट्रांसफ़र हो गया। या सपोज कल्पना को पैसे पे करने थे, आगे किसी और को पे करने थे। किसे पैसे पे करने थे? कल्पना सृष्टि को पैसे पे करना चाहते थे, तो कल्पना ने क्या किया, वही चेक सेम 15370 का चेक सृष्टि के नाम कर दिया कि सृष्टि गो एंजॉय। एंड सपोज कल्पना सृष्टि को देना चाहते हैं 16,000 रुपीज़, तो उसकी जगह पे इतने का तो चेक दे दिया और बाकी का कैश अमाउंट कल्पना ने सृष्टि को दे दिया। ओके, नाउ the title of the holder is free from all the defects. So who is holding? Kalpana is holding the check right now or negotiable instrument right now. So the title of the holder is free from all defects. Okay, now you can say there is recovery, like in case of any default, the holder of the negotiable instrument can sue. Definitely, see, if there is any default, then the holder can sue. Yes, of course. Please remember, holder can sue. Okay. To the transferer, the person who is transferring, to recover all the losses. Okay. And what is a pre-assumption? That there is a consideration, there will be a consideration, the date will be written, the time will be written, the time of transfer will be there, and order of endorsement will be there. Okay. Now, एंड होल्डर इज प्रिज्यूम टू बी द होल्डर इन द ड्यू कोर्स। इसका मतलब क्या होता है? होल्डर इज प्रिज्यूम टू बी द होल्डर इन द ड्यू कोर्स। जैसे कि अगर 3 मंथ्स के बाद, अगर सपोज इसका इनकैशमेंट 3 मंथ्स के बाद होगा, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि जो कल्पना उस चेक को, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, या उस प्रोमिसरी नोट को, या उस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर रही हैं, तो वही होल्डर क्या बन जाएंगी? होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल्डर इन ड्यू कोर्स? दैट मीन्स शी इज जस्ट होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड शी इज एक्चुअली हैविंग द राइट टू receive the money. She is not transferring it, so it will already create the right to receive the money as holder in due course. Getting it? Okay. And proof of protest, what is proof of protest? देखो, अगर कोई डिफॉल्टर पार्टी है, सपोज कोई भी डिफॉल्टर पार्टी है मतलब जिसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, वो भी हम पेश कर सकते हैं इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। अभी प्रोमिसरी नोट का आपको पता चल गया दैट हाउ अ प्रोमिसरी नोट इज। नाउ अ प्रोमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू डू, इट शुड बी ऑलवेज इन राइटिंग, लिखे में होना चाहिए, ओरली नहीं होगा। जैसे अगर तहरीन ने कल्पना को बोल दिया कि ऐसा मान लो ना, मैंने प्रॉमिस कर लिया, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? प्लीज मान जाओ ना। तो कल्पना इज सेइंग नहीं 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 नहीं, ये मुझे लिख के चाहिए। ओके, अब तहरीन अगर लिख के दे रहे हैं कि व्हाट शी इज राइटिंग कि आई प्रॉमिस टू पे यू मनी व्हाट एवर अमाउंट इज ड्यू, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। उन्हें क्या लिखना होगा? तहरीन को क्या लिखना होगा? कंसिडरेशन भी लिखना होगा। प्लस उन्हें ये भी लिखना होगा कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस टू पे दैट अमाउंट। फाइन। प्लस इट शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल, हाँ,
promise. Very nice, Sudarshan. In bill of exchange, we have 3 days grace period, but in promissory note, no. See, see here, unconditional promise. Okay, and it should be also signed. बिना साइन किए, आपको पता है ना तहरीन का साइन क्या है? आप सब लोगों ने देखा ना, कोई कॉपी नहीं करेगा तहरीन का साइन. सो यस, साइन भी होगा. इट शुड बी साइंड बाय द मेकर. जो भी बना रहा है, जैसे अगर कल्पना बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं तो कल्पना का साइन भी होगा. तहरीन अगर प्रोमिसरी नोट बना रही है तो तहरीन का भी साइन होगा. ओके, इट शुड बी साइन बाय द मेकर. नाउ देयर शुड बी सर्टेन पार्टी. ऐसे नहीं कि जिसे चाहिए वो ले लो पैसे. नो, सर्टेन पार्टी शुड बी देयर. पार्टी नेम शुड बी देयर. ओके, एंड मनी भी डिफाइंड होगा. अभी अगर मनी डिफाइन नहीं होगा और 15370 की जगह 15 लाख अगर कल्पना ने लिख लिया प्रॉमिसरी नोट, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो ये तो गलत हो जाएगा. तो इसलिए सम मनी रुपीस भी डिफाइंड होना चाहिए. एंड प्रॉमिस टू पे मनी ओनली होना चाहिए. मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे ही चलेंगे. ओनली एंड ओनली मनी. प्रॉमिस टू पे मनी. ठीक है, ओनली मनी की जगह अगर तहरीन ने दूसरा केक देने का प्रॉमिस कर दिया तो दैट विल बी रॉन्ग. तहरीन ने अपनी कार देने का प्रॉमिस कर दिया, कल्पना विल बी हैप्पी एनीवेज अगर कार मिल गई तो. बट डेफिनेटली दिस इज नॉट, दिस डज नॉट कम अंडर प्रॉमिसरी नोट. क्योंकि अगर खराब कार दे दी तो, अगर कार की जगह टॉय कार दे दी तो फिर तो कल्पना विल नॉट बी हैप्पी. डेफिनेटली दैट्स वाई पैसे डिफाइंड होने चाहिए. प्रॉमिस टू पे मनी ओनली रहना चाहिए. ओके, एंड currency note is not a promissory note, that you know. Formalities like date, place, consideration, sign, stamp should be also there. If the consideration is more than 5,000 rupees, then stamp is must. Maruti 800 toy car. Okay, ठीक है, getting it. Okay, and time limit to pay should be also defined. Time to pay should be also defined. Okay, not allowed. हाँ, barter transaction. ठीक है, ठीक है. Now bill of exchange. अब bill of exchange के almost same है. Very nice Dinesh. Correct. Awesome. Now bill of exchange के almost similar है. Like you can say similar characteristic. Okay, but who are the parties in bill of exchange? You can say one is the drawer who is actually the seller. Seller को हम और क्या बुलाएंगे? Seller ने, किसने बनाया है bill of exchange? Seller ने बनाया या buyer ने बनाया? Please tell me. किसने बनाया bill of exchange? Seller ने बनाया. Seller is the maker of the bill of exchange. Okay, seller is the drawer of the bill of exchange कि उसे मनी दिया जाए. Seller is the creditor of bill of exchange, right? Who is buyer? Buyer is not the maker, but buyer is the drawee, जिसके नाम पे बिल फाड़ा जाएगा. जैसे आप बोलेंगे कि हाँ उसे पैसे पे करने हैं, और वो ही डेटर बनेंगे क्योंकि डेटर पैसा देगा. ओके, डेटर पैसा देगा एंड ये ही पे करेंगे. पे. ओके, एंड ही इज द बायर. he or she is the buyer. Done. Okay, or you can say acceptor also. They will accept the liability. Done. Okay, now who is now pay. ये क्या किसने बनाया? अच्छा, ओके ओके. नाउ हु इज द पेई. पेई मतलब किसको पैसा मिलेगा. अब पेई ये भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकता है, एंड हो सकता है सेलर बोले. सेलर कौन है? कल्पना. कल्पना ऐसा बोल सकते हैं ना. कल्पना आप बोल सकते हैं ना, नहीं मुझे पैसे मत देना तहरीन, मुझे तो सुदर्शन को पैसे पे करने हैं. तो डायरेक्ट
आप उन्हें पैसे पे करो। तो देर कैन बी अ थर्ड पार्टी ऑल्सो, हियर देर कैन बी थ्री पार्टी। ठीक है, डायरेक्टली सेलर कल्पना बोल सकते हैं कि डायरेक्टली सुदर्शन को पैसे दो। ठीक है, तहरीन सुदर्शन को पैसे दे दो। ठीक है, और सुदर्शन के नेम पे बिल ऑफ एक्सचेंज या उन्हें ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। तो देर कैन बी थ्री पार्टीज एंड अल्टीमेटली हु विल बी द रिसीवर, हु इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पेई, जिसे रिसीव हुआ। ओके, endorser, anyone can be payee. Okay, in this example you are the payee, Sudarshan. Now see, endorser and endorsee. Now suppose Sudarshan, if you endorse this to someone else, you endorse this to Anuradha. Okay, so you will become the endorser and Anuradha will become the endorsee. Okay, you will become the endorser and Anuradha will become the endorsee. Okay, now so there may be certain parties. Usually there are what, three parties. One is the seller, who is the maker, one is the payer, and the third party is the payee, who will receive the money. And there will be endorser or endorser and the endorsee. So ultimately three parties will be there. Abhi endorser कल्पना भी हो सकता है और endorsee सुदर्शन भी हो सकते हैं. Getting it? Yes or no? So done. Bill of exchange finish. Simple. Bill of exchange finish. Now only we have to do what? Check. Check करें. Check. What is a check? Yes, it is freely transferable. Again, check is also freely transferable. Basically, checks are drawn on a specified bank. Sorry for joining me. अंकी थोड़ा सा लेट हो गए आप. 2.5 आवर्स लेट हो गए आप थोड़ा सा. कोई बात नहीं. We start from here only. Okay. So check is what? Section 6 is what check. Now okay, so हाँ बस 2.5 आवर्स का कोई बात नहीं है ना. Now specified and sorry, there should be specified bank on whom we are making. जब जागे तब सवेरा. Very nice. You are not well. Oh, okay. Please take care. But it's good that you joined. Good. See, we have done many acts till now. Oh my God. Please take care, Anki. Section 6 is check. So actually check is drawn on a specified bank, isn't it? Okay, so it can be drawn on any specified bank. And a check need not to have any acceptance. Like bill of exchange में there was an acceptance. क्या acceptance की ज़रूरत थी? Yes, of course. अगर तहरीन अपनी liability accept ना करे तो क्या वो bill of exchange complete होगा? नहीं होगा. तो इसमें acceptance की ज़रूरत है. इसमें acceptance की कोई ज़रूरत नहीं है because suppose अगर कोई आपको पैसा दे, सपोज अंकी आपको कोई पैसा दे, तो क्या आप उसे मना करेंगे कि नहीं मेरे नेम पे बस चेक मत करना. ओके, मेरे पास बहुत मनी है, किसी और के नेम पे आप चेक कर लो. ओके, लाइक हिमांशी के नेम पे आप चेक कर लो. नहीं ना. या ओके, सो प्लीज सी, सो इसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है. ये ऑटोमेटिकली किसी स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर, लाइक किसी स्पेसिफाइड बैंक का चेक के ऊपर आपका नेम लिखा जाता है और इसमें एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं रहती है. एक चेक एक जनरल चेक भी हो सकता है और एक क्रॉस चेक भी हो सकता है. बट क्या क्रॉस बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत है? नो. क्या क्रॉस प्रोमिसरी नोट की ज़रूरत है? नो. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन a cross check and a general check? That also we are going to study. But first we need to study कि a check is always payable on demand. कि अभी हम बोल रहे हैं, प्लीज कर दो. यस, वेरी नाइस. हाँ, पेबल ऑन डिमांड. बट यार हम क्या करेंगे? सी,
it is payable on after a certain period of time. राइट ओके सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. इसमें प्रोटेस्टिंग जैसे अगर मान लो डिसऑनर हो गया तो क्या इसमें नोटिस ऑफ प्रोटेस्टिंग वगैरह रजिस्ट्रेशन ब्ला 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 ऑल दोस रिक्वायरमेंट्स आर देयर? नो, इसमें नोटिस ऑफ प्रोटेस्टिंग लगेगा सेपरेटली. हमें लीगल अथॉरिटी के पास जाना होगा. येस ऑफ कोर्स नोटिस ऑफ प्रोटेस्टिंग इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू द बैंक. दैट इज लीगल प्रूफ दैट यस चेक का डिसऑनर हुआ है. क्यों डिसऑनर हुआ है, क्या रीजंस है, वो सारे हमें पता चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लिया जाएगा. अब देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ चेक. देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ चेक्स. ठीक है. one type of check is what? One is known as what? Bearer check. Bearer. Okay, now you can see a bearer check. That means क्या किया था? फर्स्ट चेक किसने बनाया था? तहरीन ने बनाया था. उन्होंने अगर सिंपली नेम लिख के दे दिया कल्पना का, ओके सिंपली, एंड कल्पना ने किसको सेंड किया? छोटू को सेंड किया कि छोटू या पर्सनल असिस्टेंट तुम जाओ इसे इनकैश करा के लेके जाओ. तो इन चेक्स पे कल्पना का नेम लिखा हुआ रहेगा एंड और बेरर यहाँ भी लिखा हुआ रहेगा. इफ यू हैव सीन दोस चेक्स देन यहाँ पे और बेरर और ऑर्डर लिखा हुआ रहता है. सो जिसके भी हैंड में द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट चेक, that person can encash that check. Okay, so holder will become the owner of the check. Very nice. Okay, next is what? The order check. Order check. अब इसमें और बेरर चेक में डिफरेंस ये होगा प्रैक्टिकली. प्लीज सी, कल्पना का नेम यहाँ लिखा हुआ रहेगा एंड और ऑर्डर भी लिखा हुआ रहेगा. नाउ जब छोटू जाएगा बैंक, छोटू गोज टू बैंक. ओके, सो बैंक में, यहाँ बैंक में गए. ओके, नाउ बैंक वाले विल कॉल कल्पना कि कल्पना क्या आप ऑर्डर करते हैं, क्या हम छोटू को पैसे दे दें आपके बिहाफ पे? एंड कल्पना विल से यस यस ऑफ कोर्स, मैं थोड़ी ना बिजी हूँ एंड आप ना छोटू को दे दो. ओके, और मैं ये ऑर्डर करती हूँ कि यस मेरे बिहाफ पे इस पर्सन को आप दे दो पैसे. ओके, देन व्हेन कल्पना विल क्लैरिफाई कि यस मेरे ऑर्डर पे पैसे दे दो, तब वो पैसे दिए जाएंगे. ओके, यस. ऑर्डर वन नहीं, ऑर्डर वन सैंडविच नहीं, ऑर्डर वन चेक. नाउ वेरी नाइस, सुदर्शन हैज ऑल्सो रिटन क्रॉस चेक, अनक्रॉस चेक. सो सुदर्शन, the first check and second check that we have done, these were uncrossed check. Third check that we are going to do will be what? Crossed check. अब क्रॉस चेक के केस में क्या होगा? The check will be like this. Okay, I'm sorry my rectangle is going थोड़ा सा इधर उधर. I am sure you I actually miss that Unacademy वाला rectangle. It is so perfect, you know. We can select, किसी को पता भी नहीं चलता है. Okay, so see, cross check में ऐसा crossing होती है. Okay, it is actually a general crossing. This is known as what? This is known as a general crossing. And हाँ, एंड अगेन एक और टाइप की क्रॉसिंग होगी. लाइक सपोज इफ यू राइट दिस वाला क्रॉसिंग एंड इसमें अगर हम लिखें एंड कंपनी या एंड बैंक या समथिंग लाइक दैट, दिस इज नोन एज व्हाट? स्पेशल क्रॉसिंग. ओके, या don't mind. Okay, so in general crossing क्या होता है? Only two parallel lines are there and they are marked in upper left corner in the words. Without any words, just generally cross किया जाता है. In case जो ड्रॉइस का जो बैंक होता है जिसका नेम यहाँ लिखा है, कल्पना का जो बैंक है ना, अब सपोज जो ड्रॉई का मैम ऑर्डर चेक नेम and order, yes, of course, bank is mentioned. Sometimes bank is also mentioned, that is in special crossing. ठीक है, and company या and bank. एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बैंक लिख देती हूँ, that will be a better one.
या फिर मैंने स्पेशल क्रॉसिंग में लिख दिया अकाउंट पे, ठीक है, निक्स बैंक, अच्छा ओके, निक्स एंड को, नाइस नाइस नाइस, ओके। तो इस केस में क्या होगा जनरल क्रॉसिंग में, इन दिस केस द ड्रॉईज बैंक, कौन है ड्रॉई इस केस में, कौन है, कल्पना के नेम पे है, okay, now see, the drawee bank, that means the issuer's bank shall not pay the amount, जिन्हें पैसे देने हैं वो पैसे ना दे, unless it is presented by the banker, that is banker of the payee, okay। so that means देखो जनरल क्रॉसिंग में जब तक कल्पना के बैंक से दूसरे बैंक में ये चेक ना जाए तब तक पैसे नहीं देने हैं, ओके। कोई भी रैंडम पर्सन आके इसे इनकैश नहीं करा सकता है। क्रॉसिंग मतलब इट इज सो 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 फिक्स कि ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और ये सीधा सीधा कल्पना के बैंक अकाउंट में या कल्पना के बैंक की तरफ ही जाएगा और किसी बैंक में नहीं जा सकता है। अब यहाँ मैंने लिख दिया एंड स्पेशल क्रॉसिंग, तो ये भी स्पेशल क्रॉसिंग में भी ये भी सीधा उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। अब कल्पना के देना बैंक अकाउंट में नहीं जा सकता है, कल्पना के महाराष्ट्र बैंक अकाउंट में नहीं जा सकता है, कल्पना के एसबीआई बैंक अकाउंट में ही मनी जाएगा, ओके। मुझे पता है कि इसमें कल्पना का नेम लिखा है, बट कल्पना के ना 4 बैंक अकाउंट्स हैं, आपको पता है कल्पना के 4 बैंक अकाउंट है, उसमें से ओनली एंड ओनली एसबीआई बैंक अकाउंट में ही जा सकता है और किसी बैंक अकाउंट में नहीं जा सकता है। ये सिर्फ बैंक अकाउंट में जा सकता है और ये सिर्फ एसबीआई बैंक अकाउंट में जा सकता है, उसी स्पेशल में, ओके, उसी स्पेसिफाइड में जो हमने स्पेशल क्रॉसिंग करी है, गेटिंग इट। अब ये होती है नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, मतलब आप इसको कहीं और इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओनली अकाउंट टू अकाउंट ही वर्क करेगा। नाउ देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर checks which comes in your exam. One is known as your truncated check and one is known as your electronic check. Truncated, क्या इसकी एक फिजिकल कॉपी होती है? हम मैम जनरल में तो बैंक मेंशन नहीं होता है, स्पेशल में होता है। यस ऑफ कोर्स, जनरल में बैंक मेंशन नहीं होता है, स्पेशल में बैंक मेंशन होता है। मतलब देखो जनरल में कल्पना के किसी भी अकाउंट में पे हो सकता है, बट स्पेशल में कल्पना के उसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा मनी जो स्पेसिफाइड है, क्योंकि हिमांशी कल्पना का एचडीएफसी में भी अकाउंट है, एसबीआई में भी अकाउंट है, आईसीआईसीआई में भी है और देना बैंक में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है। किस अकाउंट में जाया जाए तो स्पेसिफाइड उसमें स्पेशल क्रॉसिंग में लिखा है एसबीआई में ही जाएगा, तो वो एसबीआई में ही जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है, ओके। सो इधर उधर नहीं जा सकता है। दिस इज हेल्पफुल कि हम जैसे मान लो एक बिजनेस एक बैंक अकाउंट, सेकंड बिजनेस सेकंड बैंक अकाउंट, तो ये वहाँ पे यूज़फुल रहता है कि हम एक बिजनेस का पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं चले जाए, या फिर हमारा पैसा हमारी वाइफ के अकाउंट में ना चले जाए, अगर वो सेकंड अकाउंट जॉइंट अकाउंट है तो, ठीक है, वाइफ के अकाउंट में हस्बैंड के अकाउंट में वहाँ नहीं चले जाए, अगर वो जॉइंट अकाउंट है तो स्पेसिफिकली इसी अकाउंट में डालना, मैंने कमाए हैं मैं ही खर्च करूँगा या करूँगी, ओके। दैट वे ऑल्सो यू कैन सी इन स्पेशल क्रॉसिंग बोला जाता है कि ये स्पेशली इसी अकाउंट में जाना चाहिए, ओके। नाउ we have 2 more types of checks, that is truncated check and electronic check, that come in your exam. So one is हाँ, truncated check, that is known as what, shortened check, shortened check, which is actually ये बनी है स्पेशल क्रॉसिंग, राइट राइट, मैंने ऐसा रियल केस भी सुना है एक्चुअली में, दैट्स वाई with from my experience I'm telling, okay। this is a mirror image, मेरा केस नहीं है किसी और का है, I've just heard, okay। mirror image of physical check, okay। हाँ हाँ, what up sir, एक okay okay, तो सी काफी खुश लग रहा है, अच्छा ओके सी, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं ट्रंकेटेड चेक में, हमने एक चेक तो बनाया,
मैंने एक चेक लिख दिया, बट ना मुझे ये चेक भेजना है अफसर को। मैंने चेक लिख दिया, इसमें मैंने लिखा अफसर ना, अफसर मुझे नहीं पता अफसर आप कहाँ रहते हैं, बट हाँ पीने जाए मैम, अच्छा चाय थोड़ी देर बाद पी लेना। चलेगा ना, नहीं चलेगा? अच्छा, सो अफसर देखो ना, मैं आपको एक चेक देना चाहती हूँ। अफसर आप मुझे अभी अपना ईमेल आईडी देंगे? राइट, मैंने आपका नेम लिख दिया इस चेक पे। इस पे मैं लिख रही हूँ कि ठीक है, चाय के पैसे, ठीक है ओके, 500। ओह सॉरी, ये तो कॉफ़ी के पैसे हैं, स्टारबक्स वाली कॉफ़ी के हैं, आपको चाय के लिए चाहिए, ठीक है ओके। तो हाँ, तो मैं आपको आपको है ना चेक लिख के दे रही हूँ, ओके, बट मैं आपको ट्रांसफ़र कैसे करूँ? मुझे आपकी ईमेल आईडी चाहिए रहेगी, क्योंकि आप और मैं अलग अलग सिटी में रहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, चेक में लिख रही हूँ, ठीक है, उसकी मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी और मैं उस फ़ोटो को आपको ईमेल भेज दूँगी, विच इज़ नोन एज़ वो ट्रंकेटेड चेक। ठीक है, ट्रंकेटेड चेक। क्या इतिशा सिंह 10 रुपए में निपटा दो मैम? नहीं नहीं। ओके, ठीक है। अरे कल सुबह तक चाय पीते रहेंगे और क्या, ठीक है। 150 रुपया देगा, चलो ठीक है, 150 रुपया देगा, इतने की चाय पियेंगे हम, ठीक है। एयरपोर्ट पे जाके चाय पीने वाले हैं आज हम, ठीक है ओके। सो सी, electronic check, here we do not have any physical copy, no physical copy, only and only electronically fill करेंगे हम चेक, electronically रहेगा। एंड ये फैसिलिटीज़ काफ़ी सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अब साइन करना है। मैं साइन कैसे करूँ? देर विल बी अ DCS, नो सॉरी, DSC, मैं DCS लिख रही हूँ गलती से, दैट वाज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, नॉट डाउट क्लियरिंग सेशन। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो एक छोटा सा ना पेन ड्राइव में चेक साइन होता है, पेन ड्राइव में स्टोर्ड रहता है, दैट इज डिजिटल साइन, और वही मैं फिल करके एंड मैं अफसर को पे कर दूंगी, ओके। सो दैट विल बी अ नॉन फिजिकल कॉपी, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चेक, अ नॉन पेपर चेक। डन, ठीक है ओके। हाँ, इंडिया में ही है, बट आई कैन नॉट विजिट टू अफसर्स प्लेस एंड आई कैन नॉट गिव फिजिकली चेक to officer, because we are in different state probably, and different city also. Transaction done through electronic mode and check can be signed through digital signature certificate. Awesome, great. So who are the parties involved there? Can anyone help me out with the parties? How many parties are involved? One is the drawer. Who is the drawer here? कौन लिख रहा है, किसने लिखा चेक? ड्रॉवर, मैं, नेक्स्ट। हु इज द ड्रॉई? ड्रॉई, जो मेरा बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, लेट मी राइट ICICI, okay, so that will be, the bank account will be drawee, okay. The drawers bank, my bank account, ये कौन लेके आया है? अच्छा अच्छा, गाय और चाय दोनों लेके आ गए। यस मैम, बट वी वुड पक्का इन स्टारबक्स, यस डेफिनेटली, ओके। जोश कम हो रहा है, भूख बढ़ रही है नमकीन की। सृष्टि अभी शाम के टाइम में नमकीन और सोडा, जस्ट अभी से। व्हाट इज दैट? आई थॉट आफ्टर डिनर वो होता है माहौल, मे बी। ओके, ठीक है, तो ड्रॉअर एंड ड्रॉई, एंड देर इज अ पेई, हु इज द बेनिफिशियरी, ओके। सो बेनिफिशियरी, हु इज बेनिफिशियरी हियर? किसको मिलेगा पैसा? अफसर को मिलेगा, ओके। एंड देयर विल बी अ पेईज बैंक, सो बेसिकली 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई का बैंक भी होगा, ठीक है ओके। कल्पना, शायद आपका वीडियो बहुत पीछे जा रहा है, आप अभी तक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे हैं। हाँ, ये सब बोलने का नहीं होता है, राइट
Okay, ठीक है. Now the difference between promissory note and bill of exchange and check is there. Okay. भोजंती, आप भोजन खा रहे हैं, मतलब आप बिस्किट खा रहे हैं. ओके, मुझे तो ठीक है, मैं भी पानी पी रही हूँ. ओके. ओके. ओके, कल्पना, यू आर गोइंग क्या? नहीं, यू आर हियर ना. ओके, नाउ सी. अच्छा, प्रोमिसरी नोट में, हाँ, कल्पना इज कमिंग. ओके, सो कल्पना इज देयर एंड तहरीन इज देयर. ओके. Okay, Preeti, that's great. Okay, here also bill of exchange में कल्पना and Tehrin are there, and in check में which are the parties? Nix and Afsar are there. So basically, please see, Kalpana and Tehrin. Now Tehrin ने लिखा, Tehrin has written the promissory note. So who are the two parties? The person who has written this, and the maker, and the person who is receiving it. Bill of exchange में there are three parties, Kalpana, Tehrin, and one more party who is Sudarshan. So basically here we have two parties, here we have three parties, here we have again three parties, because our bank will be also involved. Whose bank? Nix bank will be there. The person who will be saying same. अच्छा, ओके, सॉरी, वो गलती से. ओके. ओके, ठीक है. ओके. ओके, ठीक है. So see, so two parties, three parties, and three parties are there. Okay, now acceptance, यहाँ पे चेक में, सॉरी, promissory note में acceptance required or not required? Acceptance is not required. Acceptance is not required only and क्योंकि तहरीन ने खुद ही मेकर है, तहरीन खुद ही बना के दे रहे हैं, तो acceptance not required. Acceptance here it is required, and here क्या यहाँ पे required है? No, यहाँ भी not required, क्योंकि कोई भी आने वाले पैसे को मना नहीं करेगा. Here it is payable on demand, and here also it is payable on demand, but this is not payable on, yeah, this is payable on demand, or it is only payable on demand. ठीक है, fine. यहाँ पे there is a promise. Okay, यहाँ पे there is an order to pay. Kalpana will be ordering Tehrin to pay, and यहाँ पे there will be again an order to pay. Okay, and here this cannot be crossed, this cannot be crossed, this will be crossed. Fine. And यहाँ पे grace days यहाँ पे allow होते हैं. Grace days, please remember, grace days, yes, but यहाँ पे कोई 3 days का grace days allow नहीं होता है. ठीक है. I can see थोड़ा सा comment section. Don't wear Unacademy today, new next ma'am. अच्छा, okay, ठीक है. डन. ग्रेस डेज के बारे में डन. ओके, 3 days ग्रेस डेज प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, बट चेक में नहीं होता है. ठीक है. गेटिंग इट? इज एवरीवन गेटिंग इट? आई गेस that is it. Only holder and due course का difference. Can you all do it like after taking a break, or you want me to do 12 hours class? नहीं, please, no. अभी से लोग क्या खाना, क्या पता नहीं क्या, नमकीन चखना, चाय नाश्ता, अब्दुल की दुकान, क्या क्या बात कर रहे हैं. 12 आवर्स तो कैसे चला सकते हैं? आज के लिए इतना ही काफ़ी है. हाँ, वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग लीगल एस्पेक्ट. ओके, सो बस आप एक चीज़ कर दीजिए. इफ़ यू कैन कन्वे दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स कि यस, ओके, कि दे कैन ऑल्सो सी इट, वेदर ऑन 1x 2x एनीथिंग, 1.5x 1.75x चलेगा. अगर आपने कन्वे कर दिया, आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है, इट्स गुड. एंड आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली और JRF लेके आ गए, बेस्ट. सीधा सोडा. ओके. ओके, लीगल, हाँ,
लीगल में व्हाट? कंटिन्यू? हु ऑल वांट टू कंटिन्यू राइट नाउ? यस मैम, आज रात तक 10 लाइक्स इंक्रीज करा देंगे। अरे वाह, घर पे सबके मोबाइल लेके आप करवा दोगे? दैट्स ग्रेट मैम। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो नहीं होगा। मतलब लाइक 10 essential elements of a valid contract I can do. I can tell you what is an agreement, what is a promise, what is a contract. उसके आगे तो फिर कैसे बढ़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 100 पेज का टोटल। वही करेंगे। चाय पीनी है? अच्छा, ओके ओके ओके, वेरी नाइस, ओके ओके। हाँ, एंड भोजनती आपको बुरा तो नहीं लगा ना? सच्ची में गलती से निकल गया। लाइक आई वाज थिंकिंग एंड आई सेड। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ईयर बता दो, हो गया थोड़ा सा। अच्छा ओके, सो इट इज 1872 या 1972? आई थिंक इट इज 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके ओके। अच्छा, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स यू कैन डू। यू वांट टू डू कॉन्ट्रैक्ट और यू डोंट वांट टू डू कॉन्ट्रैक्ट? अभी बता दो प्लीज से। ऑलमोस्ट इट इज कंप्लीटेड। हाँ, you want to do or you don't want to do contract? So much for this session. सच्ची सच्ची बताना। देन सी, इफ यू स्टार्ट अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम बिटवीन। ऐसा नहीं होगा कि आई एम कंटिन्यूइंग, मेरा एग्जाम नहीं है, यू ऑल आर हैविंग योर एग्जाम। और इफ यू कैन डू इट इन वन गो, और इफ यू वांट अ सेपरेट सेशन दैट कैन ऑल्सो बी डन। हाँ, दैट वी कैन डू। हाँ, क्योंकि देखो टिल नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड सोगा which was big one, negotiable instrument which was again a very big one, intellectual property rights, and RTI and GST. In how much time? In approximately 2.5 hours to 2.75 hours. Not now ना? हाँ, mostly तो हो गया, right? GST, yes, I have written. कुछ हम भी तो करेंगे, exactly. Okay, ठीक है, so that's it. Take income tax also someday. I have to think कि I can take income tax or not. Let's see, because income tax is so bulky, I have to write everything and that cannot be completed so quickly. ठीक है, thank you so much. हाँ, thank you so much. And no problem, Anki. You will be covering. I know you will be covering from recording. See, because it is within 3 hours, I'm sure this will be the most useful thing that you can do. इसके अलावा बस आपको दो तीन चीज़ें ही करनी है. Like you can do contract act on your own. Contract act on your own. Okay, जिसमें से 2 questions you can expect. And IT act, 1 question you can expect, but that is theory, that's why you have to do. Remaining LLP, that is not that much important. If you want to leave, you can leave. Companies Act, if you 1 question you can expect. ठीक है, thank you so much. And Competition Act also we have not done, that is also 1 question. Very very small, these are very small acts, and this is a very big one which you have to do. If you won't be able to reach this, fine, but at least do this. Okay, so everyone please like, share, comment, subscribe to this channel. Please share this video with all the learners of paper 2 NTA UGC net, and all the best. All the best. Thank you so much. And Anki, please take care of your health.
And one thing, if you have not taken subscription, you can definitely take subscription. Please take the subscription by using my referral code next28. Wait, and here huh. Please visit my telegram. My telegram channel name is Nix Niharika. And if you want to text me separately, you can text me at the rate nix28. हाँ, उस पे भी you can text me on telegram if you have any doubt. And Unacademy पे you can search me with this name Niharika Bhagtani, and my referral code is nix28. If you take plus subscription, then you will get all the 20 units for your 2023 preparation, for your all the preparation of paper 1 and paper 2. I take all paper 1 and all paper 2 units. My YouTube channel name is Niharika Bhagtani. Again, Instagram is Niharika Bhagtani, Facebook is Niharika Bhagtani. All my handles name is Niharika Bhagtani. So you can just come and you can just follow, stay connected. And if you take an Academy Plus subscription now, that is so you will get for 20% discount. It is next, see, my referral code is next28. And if you forget this code next28, you can even apply Niharika Live, Niharika Live. And please don't forget to share this session with your friends. Okay, I've already launched these courses in Unacademy Plus. We have already started. So all the best. I'll be doing legal aspect of business. I'll be giving you all the free PDF for revision, but only on Unacademy Plus. All 20 units PDF I'll be giving you, along with the explanation, along with the examples, everything that will be there in Plus. Okay, so here you have to apply the code. That's it for today. Thank you and have a nice day. Bye. Bye.